Okay. Okay. So, hello everybody. Last time we left on Unit 2. Today I will be covering Unit 2, Pathway 3 and Unit 3, Pathway 1. I will be giving a short break in between. So, um, if you want to do something else or if you want to take a break, you can do that in that time. Okay, so last we left at this one, this display a list of images using cards. We did recycler view, and then now we have to do this. I hope you all did at least till here, so that it's easier for you to connect to what I'm teaching right now. Okay, so last time we had this affirmations app, and उसमें सारी affirmations थी, just line by line. And when we left, we wanted that हमारा app exactly ऐसा ना दिखे. We want it to be a little more interesting, a little more creative than just affirmations displaying on the screen. So what we will be doing, we will be creating something like this using those affirmations. Um, okay, so first let's add images to our app. We already put the affirmations in last time. We just need to put images and then display it using cards. All right, so we had a lot of packages last time. We had a data source package, we had a data package, we had a main activity, a model package. So we have all of that with us. Let's check कि हमने कुछ छोड़ा नहीं है पिछली बार से in the code before proceeding. Okay, let's confirm. ये सारा कोड डाला हुआ है. In strings, I have all these. Then this is in data source. And then data source. This is data source.kt. It's the okay. Last time we did not. We did. That's what we have. अभी जो affirmations आ गई थी, that was in grayish thing. You don't need to worry about that. Then this is in affirmation.kt. This यही बना हुआ है मेरा. Okay. This is main activity. पास में recycler view. So main activity यहाँ पे नहीं हुआ है. Okay, that's right. क्योंकि मेरा O है actor. Okay, spelling mistake. Got it.
सॉर्ट आइटम अडेप्टर में क्या आना चाहिए? क्लास डेटा सेट साइज तो आना चाहिए. I have that. Then एक्टिविटी मेन में मेरे पास एक रिसाइकलर व्यू होना चाहिए, है मेरे पास. And list underscore item में I should have an item title here. I have that too. Okay. हाँ, तो ये सारे हैं हमारे पास. Let's proceed. अब हम डाउनलोड करते हैं इमेजेस. यहाँ से डाउनलोड करते हैं. I hope you remember how to import drawables. We have covered that in previous part है. तो इसमें हर एफर्मेशन के लिए एक इमेज है. Okay, and I want them to be imported in my drawable. So resource manager plus I want to import drawables. डाउनलोड नहीं आया है अभी. Okay, ये zip file डाउनलोड हुई है. I need these images. अब आ जाना चाहिए. Import drawable. It's still not coming. Okay, हम काम करते हैं डेस्कटॉप पे करते हैं. सारे फोल्डर दिखा रहा है. तो क्या है नॉइस का फोल्डर? Yes. So ये मेरे पास सारी images are sorry, I got all these images. Then control करके select कर लो सारी. Import. ठीक है. Now I have the images. ठीक है. हम चाहते हैं कि जो डेटा क्लास है उसमें एक वैल्यू होल्ड हो फॉर मतलब इमेज रिसोर्स आईडी होल्ड हो बेसिकली. तो ताकि भी एक जैसे एक एफर्मेशन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनेगा तो उसका एक रिसोर्स आईडी हो टेक्स्ट का और एक रिसोर्स आईडी हो इमेज का. तो ओपन एफर्मेशन आईडी. यहाँ पे अभी एक वैल स्ट्रिंग रिसोर्स आईडी जा रहा है.
वी वांट एन इमेज आल्सो, तो हमें इसमें एक और पैरामीटर पास करवाना पड़ेगा, int of resource image id string image resource id, sorry. एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, so you see something like this. What's this is called string, this is called resource annotation. How do we use resource annotation? Suppose कि तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि तुमने कोड क्या लिखा है, right? But जो तुम्हारा ऐप यूज कर रहा है, now he doesn't know कि तुम्हें किस ऑर्डर में पास करने हैं, right? If he passes like an image resource id, uh, if say an image resource id, image is passed first and then the text is passed, your app will crash. So it's helpful to use something called resource annotation, in which way कि जो कंस्ट्रक्टर है उसमें सही ऑर्डर में पैरामीटर्स पास हो जिसमें जिस वे में कॉल किए गए हैं. So how do you define? You define with at the rate. So at the rate string resource and at the rate drawable resource. They're useful because they add additional information to classes and they're declared with at the rate. ठीक है. Okay. तो हम अपने कंस्ट्रक्टर को मॉडिफाई कर लेते हैं. Now I just don't want it to say text string resource. I also want to say an image resource. ठीक है. हमने कंस्ट्रक्टर चेंज कर दिया है, बट डेटा सोर्स भी तो अपडेट करना पड़ेगा. तो हर इमेज आईडी का, जैसे हर टेक्स्ट एक इमेज के साथ एसोसिएटेड है, सो वी कांट जस्ट पास लाइक एन string. We can't just pass a string, sorry. We need to pass an image also. तो हम इसको भी अपडेट कर लेते हैं. यहाँ पे I want image also. ओके, तो अब जो मेरा लेआउट है, लेट्स चेंज माय लेआउट. पहले हमने फ्रेम लेआउट में रखा हुआ था, सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमने फ्रेम लेआउट में रखा है बिकॉज इफ यू रिमेंबर कि पिछली बार I mentioned that we just need we're just using one single view here, which is like recycler view. तो हमें इतना बड़ा constraint layout ही चाहिए. We were just using frame layout, which is one child. Now we're having two things. We need two child views. ठीक है, one is a text view and then the other is an image view. So let's change it from frame layout to something called linear layout. Linear layout में क्या होता है कि जितने भी व्यूज तुम्हारे पास है, you just want to place them linearly. Right, जैसे यहाँ पे child view and then a child view just below. So they're arranged in a vertical column. So linear layout aligns all child views in a single direction, either vertically or horizontally. So you do have the option कि तुम्हें linearly करना है या तुम्हें vertically करना है या horizontally करना है. Sorry. So linear layout is, linear means in a line. So you want a line like this or you want a line like this. That's up to you. तो हम चेंज कर लेते हैं इसको, लीनियर लेआउट कर देते हैं. वन थिंग यू नोटिस कि नीचे यहाँ पे देखो अपने आप चेंज हो रहा है. सो आई डोंट, अगर मैं ऊपर लीनियर लेआउट खोल रही हूँ तो नीचे लीनियर लेआउट अपने आप बंद हो जाएगा. आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट दैट. तो लीनियर लेआउट, ओके. अभी टेक्स्ट व्यू था, अब मुझे एक इमेज व्यू भी डालना पड़ेगा. ये हम एक इमेज व्यू डाल रहे हैं जिसकी विड्थ वी वांट टू मैच विद द पेरेंट एंड उसका आईडी है आइटम इमेज. देन हाइट को हम सर्टेन वैल्यू दे रहे हैं 194 एंड जो तुम्हारे स्क्रीन का साइज होगा, जो भी यूजर के स्क्रीन का साइज होगा, तो उस उस उसके हिसाब से ये जो वैल्यू है, इट विल शो as many cards as you can fit at like any given time. एंड देन स्केल टाइप हम सेंटर क्रॉप करते हैं. स्केल टाइप हम एट्रीब्यूट से भी कर सकते थे. हम यहाँ जैसे डिजाइन मैं यहाँ से एट्रीब्यूट से भी चेंज कर सकती थी, बट राइट नाउ वी जस्ट वर्किंग ऑन कोड, तो कोड से कर लेते हैं. ओके, अब हमें अपना आइटम एडैप्टर क्लास भी चेंज करनी पड़ेगी.
it should now we don't previously it's holding a reference to text view, okay? But now we want it should hold a reference to both text view and a reference to the image view. So how do you do the change? Let's go to item view holder from item adapter. So we have this class item view holder. हम्म, अभी तक ये सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू ले रहा था. Okay, I will modify it. Now you take an image also. You are in item adapter. हाँ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे चेंज करना है. यहाँ पे इमेज ले रहा है, टेक्स्ट ले रहा है. अभी इमेज भी लेगा. एंड लेट्स गो टू ऑन बाइंड व्यू होल्डर. ये टेक्स्ट व्यू है, मुझे यहाँ पे एक इमेज बनानी पड़ेगी. सिमिलरली जैसे टेक्स्ट डाला है वैसे एक इमेज व्यू विद द करेक्ट रिसोर्स आईडी. ओके, तो अगर मैं इसको रन करती हूँ, let's try to run this. I will try to run an emulator दिखाने के लिए, but actually system slow हो जाएगा. So you can just see कि right now मेरा ऐप ऐसा दिखेगा. There's an image and there's a text below it. So image and text. But यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि जो इमेज है उसके नीचे जो टेक्स्ट है, now I don't, the user doesn't know कि ये जो टेक्स्ट है I am strong ये कौन सी पिक्चर से बिलोंग कर रहा है. Right? There's no spacing, there's no designing here. It's just एक text और एक image डाल दिया screen पे. You won't open an app like this, right? So let's polish the UI. First, we'll put padding. If you remember, padding is जब हम margins margins के अंदर space आते हैं. Like जो भी हमारा से text box है, हम उस box के अगर अंदर space डाल रहे हैं, that's padding. और अगर बाहर space डाल रहे हैं, that's margin. Okay, let's add padding of 16 dB. Alright. So पूरे linear layout में we're adding a padding. This whole thing. And oh no, sorry. See, क्योंकि यहाँ पे नहीं डालना है. That's what I'm doing wrong. यहाँ डालना है. बस otherwise अगर मैं यहाँ डालती थी तो तो ये तो एक मार्जिन की तरह काम करता है. इस पूरे लीनियर लेआउट में पैडिंग डाल रहा था. I don't want that. मुझे अपनी लिस्ट में पैडिंग चाहिए. That. Then जो टेक्स्ट व्यू है I want it. हाँ, so जो टेक्स्ट पहले दिखा था it was very grey and small. अब ये बहुत bold है and it's larger in size. तो ये जो है question mark attribute text appearance headline 6, ये एक एट्रीब्यूट है जो प्री डिफाइंड है हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में. ऐसे बहुत सारे हैं. So, अगर तुमने गूगल पे भी देखा होगा, गूगल हैज सर्टेन फॉन्ट्स डिफाइंड फॉर यू, राइट? कुछ फॉन्ट्स you can just pick up the link for those fonts गूगल से. So एंड्रॉइड स्टूडियो में भी ये ऑलरेडी डिफाइंड है. there's this thing, this attribute. इस एट्रीब्यूट के अंदर ये चीज अपने आप हो जाती है. So I'm guessing it's doing bold and it's increasing the size and it's increasing a little spacing between the words. So it's an attribute which allows you to define text specific styling. और ऐसे तुम कोई भी ले सकते हो. It's not necessary कि तुम ये वाली लो. So if you want a different one, you can go here, blog post on common theme attributes. यहाँ से तुम कोई भी और उठा सकते हो. ठीक है. हम ये डाल देते हैं.
Then let's try to run this app. The next thing that we will be using here is कि जैसे ये पूरा text और एक पूरा image को ये एक card में डाल देगा. So now instead of just having space between the text and the image, we'll have space between a whole card. So like it's like a flashcard. So flashcard has an image and has a text and I am trunk, and then there's the next flashcard. It's still running. Still running, still running. Sorry. अभी जब तक ये हो रहा है, let's get back to this. अब मेरा ऐप ऐसे दिखेगा once it runs. अच्छा, तो now there's still the confusion. ये जो text है, ये image से ऊपर वाली image से belong कर रहा है, नीचे वाली image से belong कर रहा है. Right? So how do you fix this? You fix this with something called a card, and a card view it gives you an easy way to contain a group of views while providing a consistent style for the container. As in, it's as I said, like a flashcard. It makes it easier, right? तुम्हारे पास अगर एक flashcard, you have a piece of paper, एंड उस पर तुम जो भी तुम्हें टेक्स्ट करना है, तुम्हें इमेज करना है, एंड यू वांट कि ऐसे 10 है तुम्हारे पास, लाइक 10 यू रिपीटिंग दिस इन 10 ऑन 10 पेपर्स. तो इट्स ईजियर कि तुम्हारे पास एक पीस ऑफ पेपर हो जिसपे तुम्हें जो भी डालना है तुम वो डाल दो, टेक्स्ट, इमेज, बटन्स, एंड देन यू जस्ट कीप रिपीटिंग दैट प्रोसेस इंस्टेड ऑफ हैविंग अ होल बिग लिस्ट एंड देन हैविंग टू आइडेंटिफाई कि कौन सा किससे बिलोंग कर रहा है. सो विल यूज material card view. It's a new view. um, so we'll run हो जाए, then we'll go.
Emulators is a really bad option, in my opinion, for running apps. I think you should always go for physical device because it's going to make your system slow, and then there are a lot of errors in the emulator that you really don't need to concern yourself about. Uh, I just close this. I don't have my wire with me right now, but if you practice this on your own, keep checking the output on your actual phone, not just on the emulator. I mean, it is up to you, but go for the physical device. So, ऐसे ये ऐसे दिखेगा ठीक है okay. तो हम फिक्स करते हैं वी नीड अ मटेरियल कार्ड व्यू जो लीनियर लेआउट है उसके अराउंड वी गोइंग टू पुट ये मटेरियल कार्ड व्यू and उसका layout width and height is to wrap content. Height is to wrap content and the width is to match parent and we're providing a margin of 8 dp on that. तो ये मेरे पास linear layout है उसके around I'm going to put this and I have to close it also. So I have to close it also. Says no orientation specified and by default it is horizontal orientation. Okay, it's no error. That's okay. It's fine. तो अब तुम्हारा ऐप ऐसे दिखेगा something like this. Can you see these small lines? So every flash, sorry, every image has a text and it's placed inside a card. Next we can change theme colors. So पहले black था. If you want this to be blue, you can change theme colors. We can create a new XML file, themes.xml, and then place a primary color and a primary color variant. You can do on your own this. Next, you can update dark theme colors. So in case you have a dark mode, it's for that. This is for changing the app icon. I will not be covering this because ये तुमने खुद से किया होगा पिछले 5 में. Try to do this on your own, changing the app icon and changing the app colors. So here's the solution code. और किसी को directly install करना. All right. So now we'll do test list and adapters. So, this is running unit and instrumentation test. So ये वाला activity भी मैं नहीं cover करवा रही हूँ. So like the previous pathways test,
You will do these instrumentation tests and on your own. It's very easy. So you're going to do this on your own. Then, hmm. So your challenge in this unit. So if you remember from in this unit is to make a Doggler's app. If you remember from the last unit, we had to make a lemonade app, right? At the end of each unit, there is one app that you have to do on your own, parts of it, not completely. So lemonade app में भी तुम्हें बहुत सारा code दिया होता है. You just have to put in some of the code. Similarly, यहाँ पे बहुत सारा code दिया हुआ है. You just need to fill in some code. What is the Doggler's app? So Doggler's is basically so who is saying कि वहाँ से they call the co-workers Googlers. So we're going to create an app for our pets like dogs. We call them Dogglers. Um, what the app does it shows so when you scroll and it shows you a list of the Googlers. Say so certain people like say my neighborhood के आसपास के लोग their pet dogs along with a bit of information about each such as the name, age, hobbies, and photographs. And you will have to use recycle view in this, and you'll have to use an adapter. And there's this option vertical, horizontal, grid. So whichever option the user clicks, your data will be aligned according to that. So when you launch app, you're greeted with this screen vertical, horizontal, grid. So suppose मैंने click किया vertical, तो मेरे पास ऐसे display हो जाएगा. Suppose you click horizontal, this is how you display. And if it's a grid, so this is how you display. जिसमें एक बारी में एक row में सिर्फ दो dogs information display होगी. That's what grid does. And all of these layouts are powered by the same adapter class. Uh, तो तुम्हारा काम क्या है? You have to build the layouts for recycler view cards. ये जो एक कार्ड है तुम्हें इसका recycler view बनाना है. And then जो adapter है, you need to fill in the code for the adapter ताकि recycler view उस adapter से चीजें use कर सके. So to start, you can import from here from GitHub. It's the same as you did last time. तो तुम्हारे पास ये बहुत सारी चीज़ें बने हुए आ जाएंगी. All these packages जैसे हमने यूज़ किया है डेटा सोर्स लेआउट डॉग कार्ड अडेप्टर ये हमने अभी बनाए हैं. You have to implement layout. First is कि जो vertical और horizontal layouts है they are identical. तो इनके लिए तुम एक single layout file बना सकते हो and then you could just change the orientation. तो ग्रिड लेआउट जो है that's a little different क्योंकि उसमें जो the layout displays the same thing but as you saw इन दोनों कार्ड्स में सेम वे में there's a name, age and hobbies. Name, age and hobbies. यहाँ पे name, age and hobbies are in a vertical line. तो सिर्फ ग्रिड व्यू का लेआउट अलग है. So उसके लिए हमें एक अलग लेआउट फाइल बनानी पड़ेगी. And इसके लिए चार views चाहिए. There's an image view for dog's picture, a text view with dog's name, text view with dog's age, and text view with dog's hobbies. And ये जो card है, each card, so can you see it has a little bit of a shadow and it has borders. So you have to implement that also. तो जो हमारे पास मटेरियल कार्ड व्यू था जो हमने पहले भी इम्प्लीमेंट किया है इसके अंदर तुम्हें कंस्ट्रेन लेआउट डालना पड़ेगा to add all your remaining views. You will make two XML files, horizontal, vertical list, and then grid list item. Then you have to build the XML for both of them. यहाँ पे specification दे रखी है of spacing, margins, everything. You even given the attribute that you are using. Grid value maybe you're also given the attribute, the age, the width, all of them. नेक्स्ट तुम्हें करना क्या है तुम्हें अडेप्टर को इम्प्लीमेंट करना है. सो ये वाला पार्ट ऑलरेडी गिवन होगा क्लास डॉग का अडेप्टर. उसके अंदर तुम्हें ये जहाँ पे भी टू डू वाला पार्ट है कमेंट्स में यू नीड टू फिल दैट. You need to make an on create view holder to override it, a dog card view holder, and initialize the data of data using the list found in data or data source. ये सब हमने पिछले वाले ऐप में किया है. So
shouldn't be that difficult. In case you do have errors or questions, you can discuss them in the next session. Um, okay, so define a variable or constant for the list of dog data. जैसे हमने list of affirmations के लिए था list of dog, and then the list is found in data source, mm, the data package. यहाँ भी इसने resource annotation use करी है so that सही resource pass हो. So all of these are text, right? तो इसमें वो तो worst case that would happen तुम्हारे age की जगह name display हो जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पे image की जगह text चलेगा then that would be a problem. तो इसने drawable resource कर दिया है to show कि the first one is an image resource and then the other three are string properties. Then हम जैसे पहले adapter बनाया था. So same adapter, it needs a context and it needs the layout from the site review. Okay. So ये सारा हमने किया हुआ है on bind view holder get item count. ये सारा हमने पिछले ऐप में बनाया है. So this is something that you have to do. Toggler's app. And then this is I told you last time कि Lemonade app मैंने पूरा करके दिखाया था. But on after that जो भी unit के end में app होगा to implement on your own, you will do that by yourself. Sorry, you will do that by yourself, and I will just discuss them in the next session. All right, this is testing your app. Okay, so let's go for the quiz. हाँ, तो मैं screen पर रख रही हूँ, and then I will. Can you have 10 seconds to write the answer in the chat? Okay, so I'll discuss the quiz. Before running the below code, simple list should be initialized as a. So अगर तुम देख सकते हो add हो रहा है, remove हो रहा है, तो this can't be a read only list. So it has to be mutable list. Mutable. Yeah. Which of the following statements are valid? So okay. Which of the following statements are valid? Now there's val list of 1 to 5. Yes, you can do that. Val odd numbers mutable list of 1 9 15. Yes, you can do that too. Then the thing is you can't write a string without quotation marks. You can always write numbers with quotation marks.
Val list values is mutable list boolean. That's not correct. The data type cannot come like this. Then val fruits list apple, banana, pear. This is also not correct. You need to have a list of, then val words list of type string, and then list of jump, run, skip. Yes, you can do that. Why does a recycler view need an adapter? Um, it needs to adapt data to display on a specific device type. No, that's not the only function. To create a new view group, no. To adapt data from a data source into JSON, no. To create new view holders and bind the data to them, yes. Which of the following are advantages by of using a recycle view? It comes with built-in layout manager. Yes, it does. It lets you use packages to organize your code. It's not really a function of recycle view. You can anyway use packages and organize your code. It helps save processing time, which can help scrolling through less smoother. Yes, because with a recycle view, you don't have to go to each view every time. So it does save some processing time. uh, because processing काम adapter से already करके दे रहा है. So and recycle view is designed to be efficient for less by reusing views that have scrolled off the screen. Yes. Uh, yes, it is designed to be efficient. Like I said, कि it's जो भी views वही screen पे नहीं है. You can reuse those containers, or say you have run out of views, you can also help create, or if you want to delete a certain view from its container and then place a new one, it also helps you do that. It automatically incorporates material design components. No, doesn't know that. Which of the following is true about packages? You can use packages to organize your code. Yes, you can. In order to use a class from another package, you have to explicitly import it. Yes. The package name is usually structured from specific to general. It's nothing like that. It is good practice to use packages to group classes by functionality. Yes, it is. Why should you ensure that the correct type of resource ID is passed to a What should you do to ensure that the correct type of resource ID is passed into a constructor? You use resource annotations. You can't use an adapter to force the type. It's not like you can only use a string and an image resource. You can have a lot of other resources. And then use a naming convention to pass the ID in the form R type. That's not that helpful. No, you can use resource annotation for that. So in the below code, what should be written in the for loop so that the output returned is a list of numbers 1 to 3 with each number printed on a new line. So it should be for num in numbers. So printing num in numbers and goes 1 till 3, just like the whole list. Okay, we did this. Okay, so we will start with unit 3, the first pathway, and then in about half an hour and 45 minutes, I'll give you a little break because we will be finishing the first pathway of unit 3 today. Let's go to this. Okay, so
third unit is navigation. Enhance your user's ability to navigate across, into, and back out from various screens. So you will be using intent activities, and you will be learning a little more about user experience. There's four pathways. We will cover the first one today. Welcome to Unit 3 of Android Basics. In the last unit, you learned more about layouts by building a tip calculator app that followed material design guidelines. You also built an affirmations app that displayed a scrollable list of text and images. Great job with those apps. Now, you may have noticed that the apps you've built so far in this course consist of a single screen. Next, we're going to take it a step further and build apps with multiple screens that you can navigate between. First, you'll build a words app. It lists letters of the alphabet, and clicking on a letter brings up a new screen showing words that start with that letter. We'll show you two different ways to implement this app. In Pathway 1, you'll implement this as two activities and use an intent to launch a second activity. In Pathway 2, you'll learn about the Jetpack navigation component and how to have multiple fragments within an activity. Then you'll modify the words app to use two fragments within a single activity. As these apps become more advanced, you'll need to learn about good app architecture so that your apps are easier to maintain and scale in the future. We've created some standalone apps that you'll modify to help you learn core Android concepts. For example, you'll work with the dessert clicker app to learn how the activity lifecycle works on Android. This will be important so that your apps behave as users expect. In Pathway 3, you'll build a game app that challenges the user to unscramble words. As the user correctly guesses words, the score is continually updated on screen. The concepts you learn along the way will all come together in Pathway 4. This is where you'll build a cupcake app that has different options on each screen for creating a delicious cupcake order. Whew, that's a lot of apps, but don't worry, you got this. See you in class. Okay. तो यहाँ पे फर्स्ट में बहुत सारे ऐप्स इस पार्ट में बहुत सारे ऐप्स हैं. Let's start with a very simple word app. So what is a collection? Now collection is basically, it's a very simple word. जैसे सबको पता है, collection is a collection, right? It's a group of related items. Like you can have a list of words, you can have a set of employee records. So collection can be ordered or unordered, and items can be unique or not. So जिस तरह की collection है उस पर depend करता है ये. In general, a collection can be ordered, unordered. Items duplicate है, unique है, दोनों हो सकते हैं. One type of collection जो हम already पढ़ चुके हैं is list. List में you need to have an order to the items, but इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है that the items are unique or not. For example, you can have 2 times an apple in the list. That's completely fine. But then they will have an order to those items. So it's the first, this is like, it's the list, this is the first index, this is the second index, this is the third index. You can't just randomly access it. You need to go by first and second index to pass to reach the third index, which is 8. So they're ordered. जैसे कि लिस्ट में होता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल लिस्ट, वैसे ही म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल कलेक्शन हो सकती हैं. And then there are numerous functions for immutable collection, mutable collections. Like you can add or delete items, you can view them, you can manipulate collections. Okay. तो जैसे ये है, अगर ये लिस्ट में प्रिंट करती हूँ तो it would print without an error. So now इसमें 2 बार 5 है, इसमें 2 बार 8 है, 2 बार 0 है, and still prints. That's fine. इसमें 10 नंबर है from 0 to 9, and then कुछ बिल्कुल भी appear नहीं हो रहे हैं, कुछ एक बार ज़्यादा हो रहे हैं. So order of the items in the list matters. तो ये for sure है कि first item मेरा 0 है, and then the second item is 3.
ये ऑर्डर मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता है कि उसमें 2 बार 3 आ रहा है या 3 बार 3 आ रहा है। अनलेस हमने चेंज करें वो उसी ऑर्डर में रहते हैं। सो देयर इज अ फंक्शन सॉर्टेड, जैसे हमने पिछले उसमें बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े थे, कंटेन्स एंड ऐड, वैसे एक फंक्शन है सॉर्टेड। सो इफ यू पुट सॉर्टेड फंक्शन ऑन एनी लिस्ट, देखो उसने सॉर्ट करके डाल दिया। Okay. Then there's another type of collection which is sets. Sets is also a group of related items, लेकिन इसमें unlike a list, इसमें duplicates नहीं हो सकते, and but here the order does not matter. Like list, order matters, duplicate elements do not matter, and then sets, the duplicates there cannot be duplicates, and the order does not matter. सो जैसे कि नॉर्मल मैथ्स में होता है, जब हम सेट लेते हैं एक्स एंड वाई का, या तो एक सेट में एक एलिमेंट हो सकता है या वो नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो सेट में है तो उसका एक ही कॉपी होता है, लाइक 3 एक सेट में एक ही बार आ सकता है, तो या तो 3 होगा या 3 नहीं होगा, सिंपल। सो इट्स सिमिलर टू से यू हैव अ सेट ऑफ बुक्स, तो अगर तुम एक ही बुक बार बार पढ़ रहे हो, डजंट चेंज द फैक्ट कि तुम उस बुक को पढ़ चुके हो, राइट। तो या तो बुक पढ़ी हुई लिस्ट में होगी या नहीं होगी, इट डजंट मेक सेंस टू पुट इट अ नंबर ऑफ टाइम्स, इसलिए डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। हाउ टू मेक सेट, जो मेरे पास ऊपर फंक्शन था, मेरे पास एक लिस्ट थी ऊपर, आई कैन कन्वर्ट इट इनटू अ सेट, numbers dot to set, and then if you print this to set of numbers, तो 0 3 8 4, यहाँ पे you see इसने order change नहीं किया, so 3 8 4 order is not sorted, but जो duplicates element है वो हट गए हैं, duplicate elements हट गए। So a set can also be mutable or immutable. So if it's set of, it's a read-only list, it's a read-only set, and if it's mutable, then it's a mutable set of. And then you can print हाँ, so यहाँ पे देखो order does not matter, तो अगर मैं 1 2 से कंपेयर कर रही हूँ 3 2 1 से, जैसे लाइक तुम दो सेट्स कंपेयर करते हो, तुम ये कंपेयर नहीं करते कि किस, तुम 1 से 1 एलिमेंट मैच नहीं करते, तुम दो सेट कंपेयर करने के लिए तुम ये देखते हो कि अगर इसमें ABC है इसमें भी ABC है, तो दोनों सेट्स इक्वल है, राइट। तो सेम चीज सेट 1 इक्वल टू सेट 2, देन प्रिंट करना है, पहले प्रिंट करना है दोनों सेट्स, एंड देन हाँ, एंड देन इसने फंक्शन लगाया सेट 1 इक्वल टू सेट 2 का, एंड इफ इट इज ट्रू इट्स अ बूलियन फंक्शन, तो ट्रू वरना फिर फॉल्स। और यहाँ पे भी एक लिस्ट म्यूटेबल थी, एक लिस्ट म्यूटेबल थी, एक लिस्ट नहीं थी, इट डज नॉट मैटर, म्यूटेबल लिस्ट को इम्यूटेबल से कंपेयर तो कर ही सकते हो। अच्छा, एंड देन वन फंक्शन दैट यू सीन ऑन अ लिस्ट, ये लिस्ट पे यूज you've seen before, sorry, this function, but लिस्ट पे नहीं यूज किया है, is contains, it tells you if an item is in the set or not. So set of numbers था मेरे पास वो बड़ा सा 0 3 8 4, and then contain 7 false नहीं है। हाँ, अब जैसे मैथ्स में तुम इंटरसेक्शन और यूनियन कर सकते हो दो सेट्स का, यहाँ पे भी कर सकते हैं। You can use the function intersect or the function union for intersection and union of two sets. Now another type of collection is maps. Map is, it means mapping an item. So यहाँ पास एक broad categories हैं, say flowers, and then तुम उसको map कर रहे हो to flowers, so daisy, sunflower, rose. Then you have a broad category animals, and then you're mapping it to bear, bird, cat. A map is a set of key value pairs. ये मेरी key है flowers और ये मेरी value है daisy, sunflower, rose. So map is essentially a set और इसमें key value के pairs होते हैं। Key सिर्फ एक हो सकती है, so keys are unique. तो तुम्हारे पास सिर्फ एक कैटेगरी हो सकती है flowers, उसके अंदर जितने भी flowers हैं वो रिपीट हो सकते हैं। Say you can write daisy 2 times, that's fine. वैल्यूज में डुप्लीकेट्स हो सकते हैं बट की डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, और ना ही की के अंदर, यहाँ पे से इसकी ब्रॉड कैटेगरी है फ्लावर्स, अगर मैं की में दो चीजें लेती तो उसमें डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते, इट वुड बी 1 and 2, इट कैन नॉट बी 1 1 2। हाउएवर उसकी जिस चीज को मैप कर रहा है
उसमें हो सकता है. So each key maps to and each key can map to exactly one value. मतलब flowers जो है उसको मैं दो वैल्यू से मैच नहीं करवा सकती, उसमें दो सब कैटेगरीज में नहीं डाल सकती. हर की एक वैल्यू होती है और ये अलग हो सकता है. कैन बी स्ट्रिंग्स, नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स और इवन अ कलेक्शन ऑफ अनदर, इवन अ कलेक्शन लाइक अ लिस्ट और सेट. हाँ, तो ये कब यूजफुल है? जब तुम्हारे पास पेयर्स है डेटा का एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई ईच पेयर बेस्ड ऑन इट्स की. तो जैसे ये बस फ्रेड टू 30, ठीक है. तो मेरे पास ये मेरा फ्रेड की हो गया एंड देन हाँ, सो फ्रेड मेरी की है एंड देन 30 इज दिस जो भी है वैल्यू, सॉरी 30 इज द वैल्यू. तो मैं इसमें आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया है. नहीं, I was right, sorry. It creates a mutable map of string key to an int value. ठीक है. तो फ्रेड में अभी उसने 30 सिर्फ उसकी एज डाली है. दिस जस्ट वन थिंग. वैल्यू में और भी चीज डाल सकते. इससे फ्रेड के बारे में अभी उसने 30 डाला है, इससे 30 मैरिड और चाइल्ड और वट एवर इट इज. सो फ्रेड लेकिन एक ही हो सकता है. फ्रेड के बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो सारी इस वैल्यू में जा सकती है. And then same map can be mutable or immutable. So if it's mutable, it's mutable map of, and then we're specifying string and int. How do you map Fred to 30? It's very basic. It's English में ही है ऐसे. If you try to read the code, it's like you're reading English. Map Fred to 30, map and to 23, and then print this people's ages. तो अगर तुम इसे प्रिंट करोगे तो इस ऐसे प्रिंट हो जाएगा Fred equal 30 and equal to 23. अगर हमें और एंट्रीज डालने हैं सिंस म्यूटेबल है तो ऐड करने के लिए फंक्शन होता है पुट. यू डोंट ऐड, यू पुट people's ages dot put Barbara and 42. And you can also use shorthand. तुम्हें put अगर नहीं यूज करना है people's ages, you have to use different brackets, square brackets, Joe equal to 51. तो प्रिंट करोगे अगर इसे सारे सेम आ जाएगा, Fred 30 and Barbara Joe. हाँ, तो keys are unique, नेम इज यूनिक. जो उसकी वैल्यूज है वो डुप्लीकेट हो सकती हैं. तो इसमें ये हम्म, हम्म, अगर अगर तुम सेम की से एक आइटम ऐड करने की कोशिश करोगे, से पीपल्स एजेस फ्रेंड एंड 31 व्हेन यू प्रिंटेड, तो अब मेरा फ्रेंड अपडेट हो गया है. सो फ्रेंड जो है फिर से ऐड नहीं हो रहा है, बट जिस वैल्यू पे वो मैप कर रहा है वो वैल्यू अपडेट हो गई है. ठीक है. तो अभी हमने कन्वर्जन की थी लिस्ट को सेट बनाने के लिए टू सेट, राइट. तो हम इसमें एक और चीज पढ़ेंगे फॉर ईच. सपोज हमें प्रिंट करना है. अभी हमने हमने एक फॉर फंक्शन पढ़ा हुआ है, राइट, प्रिंट्स फॉर एवरी item in the list. It prints, it loops through all the items in the list. So suppose you want to print the items in people's ages and you want to include the person's name and age. For example, you want to include Fred is 30. Just want Fred equal to 31 नहीं चाहिए मुझे. I want properly Fred is 30 and is 23. हाँ, तो उसके लिए you can simply use for, very easy. But Kotlin already तुम्हें एक function देता है for each, क्योंकि collection कलेक्शन में सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉल करना या उन पे काम करना इज अ वेरी कॉमन ऑपरेशन. तो कॉटलिन ऑलरेडी एक फंक्शन देता है फॉर ईच. फॉर ईच is very similar to for. It lets you go through all the items and performs one operation on each one, and performs an operation on each one. So
for की जगह for each I want to print it key and it values. It का मतलब क्या है? It is a special identifier. Uh, so it's यहाँ पे देखो for ऐसा for loop से सिमिलर है. So for loop से सिमिलर क्यों है? Because अगर तुम for loop करते थे तो तुम for num in numbers करते थे. तो यहाँ and then you have to uh, loop it. यहाँ पे मेरा कोड काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है because for each and then I have a special identifier it. So instead of specifying a variable for the current item, variable से जब जगह नहीं दे रही, I can just use an identifier it. It का मतलब यही है कि you want the variable for the current item. So मेरा कोड छोटा हो गया. Print it key and then is value 23. हाँ, अब this is what we wanted, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉमा मेथड आ रहा है. सॉरी, यू कैन सी दिस एक्स्ट्रा कॉमा. अब मुझे कॉमा नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं फॉर ईच से प्रिंट करूँगी तो कॉमा आएगा. ठीक है, क्योंकि देखो इट की इज इट वैल्यू कॉमा, तो मुझे अभी कॉमा नहीं चाहिए. So now there is another function, map function. Map function is not the same as map. Map जो है वो कलेक्शन थी, ये map function है, it's different. एंड इस मैप का मतलब होता है so this map is different from the map set. Sorry, the map collection. This is a map function, and it apply ये transformation का काम करता है to each item in your collection. अगर मैं for each जगह map कर दूंगी it key the is it value, and then how do you want to join those strings? I want to join with a comma. तो तो मेरा लास्ट का कॉमा हट गया. ठीक है, अभी क्या कर रहा है people's map print people's ages dot map. It applies the transformation. पहली बात इसने ट्रांसफॉर्मेशन करी ऑन ईच आइटम इन पीपल्स एजेस, एंड देन इसने एक न्यू कलेक्शन बना दी जो ऑफ योर ट्रांसफॉर्म्ड आइटम्स. देन ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ये हमने इसलिए लगाए हैं टू शो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे हर एक आइटम पे चाहिए, नॉट जस्ट वन. And so it takes a key value, it takes a key and then makes a value, and then it transforms it into a string. Fred is 31. अभी एक नई कलेक्शन बन चुकी है. पहले क्या थी मेरे पास Fred equal to 31, so like Fred 31 and 23, ये कलेक्शन थी मेरे पास of set. Now इस फंक्शन यूज करके एक नई कलेक्शन बन चुकी है. Fred is 31, then the next one is Anne is 23, next is Barbara is 42. ये बन चुकी है मेरे पास. uh, so see, it turns Fred 31 into something like Fred is 31. And join to string method is used to जो भी मेरा ट्रांसफॉर्म कलेक्शन है उसको मुझे कैसे डिस्प्ले करना है. तो हर स्ट्रिंग को मुझे कैसे जॉइन करना है, आई वांट इट विद द कॉमा, एंड it does not add it to the last item because it knows कि last item है. So printing a list, उसको पता है कि last item ये है मेरा, आगे नहीं प्रिंट करेगा कॉमा. And then all of this is joined together using a dot, just chaining कर चुके हैं हम पहले. अगर तुम्हें कॉमन नहीं चाहिए, you can just put anything in join to string. Okay, so another operation is filter. Filter क्या करता है? Filter returns those items in the collection which match based on whatever expression you are passing. Same में डाल रही हूँ filter names. Filter करना है मुझे जिसकी की लेंथ 4 से कम हो. This is also chaining. की लेंथ 4 से कम हो वो मुझे फिल्टर करते हैं, और then I have to print that. So and 23 जो 51. एंड इसके आगे वो नहीं है राउंड ब्रैकेट्स, बिकॉज जो इट है इट एनीवे रेफर्स टू द करंट आइटम इन द लिस्ट. हाँ, so lambdas and higher order functions.
um ओके, तो अभी हमने देखा कि हमने यहाँ पे कॉल करे पीपल एजेस डॉट फॉर ईच। इस फॉर ईच के आगे वो राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए, दे जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स, सीधा फंक्शन के। क्यों? इट्स बिकॉज वी यूज समथिंग कॉल्ड लैम्डास। ये हमने पीछे भी कहा था, मैप में भी एंड फिल्टर में भी सेट की कोई राउंड ब्रैकेट्स नहीं है, सीधा कोड दिया हुआ है और इट्स स्टिल अ फंक्शन। तो क्यों नहीं है? uh, so this is a lambda. If you write a small function in the curly braces, but there is no function name side, a function with no name which can immediately be used as an expression. So, um, so for each is a function, but यहाँ पे um, it's not acting like a proper function. So it's like ये जो मेरे पास expression है, I want to immediately use it instead of कि मैं कहीं और जाके for each define करूँ, मैं immediately यहीं पे use कर रही हूँ. It's a very small code, and then uh, and then I'm using it with something called for each. So this is what lambda is: a function with no name which can immediately be used as an expression. Essentially, this function has no name क्योंकि इसके आगे for each आगे round brackets तो है ही नहीं. तो that's lambda. Uh, huh. Why are we knowing about lambda? Because if you know that concept, then you can store functions and variables in classes, or you can pass function as arguments. अब sort of int or text, the int, string, bool की जगह, we can also pass functions as arguments, and we can even return the functions. Um, so how do you enable this? ये ऊपर का फंक्शन कैसे काम कर रहा है? फंक्शन टाइप जो होती है, it's used to define a specific type of function based on its input parameters and return value. मतलब जैसे normally function type यही होती है ना कि you have an int and then you have some value here or some expression here. फंक्शन बेसिकली ऐसे काम करता है. तो फंक्शन टाइप को क्या होता है कि you're specifying the type which is int, and then you're using an arrow, uh, hyphen and then greater than mark, and you're specifying the expression or the integer. ये फॉर्मेट है फंक्शन टाइप का. So ये जो फंक्शन है क्या करे, it must take in a parameter of type int, yes, and then return a value of type int, right? uh, this arrow is for return type, मतलब केस के आगे जो भी है वो रिटर्न टाइप है. तो इसमें हम एक फंक्शन डाल के देखते हैं a int and a star 3. तो ये फंक्शन ट्रिपल कर रहा है द वैल्यू ऑफ वट एवर इनपुट इज गिवन. ठीक है, अगर मैं 3 डाल रही हूँ तो 9 दे रहा है, अगर मैं 2 डाल रही हूँ तो 6 दे रहा है. तो पैरामीटर पहले आता है a int and then return type फंक्शन एरो के बाद आता है a star 3. दिस इज अ लैम्डा फंक्शन यहाँ पे. हाँ, हम ये जो लैम्डा है इसको हम एज वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हैं. से यू हैव अ वैल नंबर and it's of int type and its value is 5. ठीक है, हम एक वैल ट्रिपल देते हैं which is taking of an integer. It's taking a data type of int and return expression है int, so it's returning this int 5. इसका lambda क्या है? It takes a of type int and it returns a star 3. तो अगर तुम इसे प्रिंट करोगे, ये मेरा फंक्शन है, and then if you print this you get 5 3 15. So val triple
So val triple of int type and return type int. The expression is data type int, return type a star 3 of type int, and then get 50. एंड ऐसा कॉमनली लैम्डा में सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर होता है, यहाँ पर सिर्फ ए है, जस्ट ए एंड देन स्टार 3. इट्स सिंगल पैरामीटर होता है, तो अगर सिंगल पैरामीटर होता है तो हम उसको इट यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द होल पैरामीटर. यू कैन जस्ट यूज इट इंस्टेड ऑफ ए स्टार 3. यहाँ पर सिर्फ एक पैरामीटर है ए ऑफ टाइप इंट एंड देन ए स्टार 3. मैं उस ए को हटा के इट यूज कर सकती हूँ. Okay, now higher order functions. So now let's manipulate functions. Higher order function का मतलब होता है you're just passing a function like a lambda to another function, or you're returning a function from another function. So those are higher order functions. जैसे map, filter, and for each. These are examples of higher order functions because they take a function as a parameter. Filter जो है, it's taking a function as a parameter, which is a lambda, and then it's having this expression. तो जैसे इसको इस वे में लिख के देखते हैं, वर्किंग वे में. So val triple int it star 3. फिल्टर क्या कर रहा है? 8 डॉट की डॉट लेंथ लेस देन 4. तो इसमें भी एक ही पैरामीटर था, तो इसलिए इसने 8 यूज किया है. एक ही पैरामीटर क्या है? की. दैट्स इट. एंड इट्स ऑफ जैसे एक ही टाइप का रिटर्न, एक ही रिटर्न टाइप है, एक ही डेटा टाइप है. हाँ, तो एक और फंक्शन, एक और हायर ऑर्डर फंक्शन सकता है सॉर्टेड विद. व्हाट इज सॉर्टेड विद? If you want to make a list, if you want to sort a list of strings, we can use a built-in function sorted, है ना. हम देख चुके हैं कि हम sorted से sort कर सकते हैं. अगर हमें एक string को sort करना है based on its length, अगर हम sorted यूज करते हैं तो वो alphabetically arranged रहता है. अगर हमें sort करना है on based on the length, से 3 letter word पहले है, फिर 4 letter word है, 5 letter word है, तो हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा, राइट. तो कोड में क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे तो स्ट्रिंग की लेंथ, विल टेक द लेंथ ऑफ 2 स्ट्रिंग्स देन विल कंपेयर देम. तो हम इससे हम एक लैम्डा फंक्शन पास कर सकते हैं व्हिच इज गेटिंग द लेंथ एंड देन कंपेयरिंग देम, द फंक्शन कॉल्ड सॉर्टेड विद. ठीक है. हाउ डज इट वर्क? अगर रिटर्न वैल्यू लेस देन 0 होती है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज लेस देन द सेकंड ऑब्जेक्ट. अगर 0 आती है देन both objects are equal. अगर रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन 0 है then first object is greater than the second object. ठीक है. अगर मैं सॉर्टेड से प्रिंट करूंगी तो देखो A B F J ये अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया. आई वांट अ सॉर्टेड विद फंक्शन जो क्या कर रहा है, इसके अंदर एक लैम्डा फंक्शन पास किया मैंने, स्ट्रिंग of type string 2 of type string. It takes 2 parameters, so हमें it नहीं यूज कर सकती. It's taking these 2 arguments and then function क्या उसमें return क्या कर रहा है, return expression और what it's returning is string 1 dot length minus string 2 dot length, and then that's the function of sorted with. तो अभी lengthwise return हो गया, lengthwise list print हो गई. इसको क्लोजली देखते हैं. string 1 of type string 2 of type string. तो इसमें 2 पैरामीटर्स हैं and then there's a function arrow and then function body string 1 length minus string 2 length. This is the return value, right, in the lambda. The certain lambda arrow के बाद जो भी होता है it's return value. So in this case it's returning the difference between length of the first string and length of the second string, which would be an int, right. Which तो इसको अगर तुम माइनस करोगे तो कुछ नंबर में आएगा, राइट, इंट में आएगा, विच इज परफेक्ट. क्योंकि अगर हम मैच कर रहे हैं तो हम 0 से मैच करें, राइट, ग्रेटर देन लेस देन 0 और इक्वल टू 0. तो सॉर्टिंग के लिए भी यही चाहिए. इफ string 1 is shorter than string 2 it will return a value less than 0. string 1 and string 2 are the same length, return 0.
and greater than 0 का मतलब है string 1 is longer than string 2. Okay, so let's get back to Android Studio के concepts like on-click listener, and ये हम use कर चुके हैं text like on-click listener is another on-key listener. uh, तो यहाँ पे भी lambda function यूज हो रहा है. जब हम बुलाते हैं सम कैलकुलेट बटन के ऊपर, अगर हम बुलाते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर, दिस फंक्शन सेट ऑन क्लिक लिसनर कैलकुलेट टिप, दिस इज आल्सो हायर ऑर्डर फंक्शन. ठीक है, इसमें हम लैम्डा का यूज कर रहे हैं. हाउ? तो इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो कैलकुलेट बटन डॉट यू वांट टू कॉल सेट ऑन क्लिक लिसनर. व्हाट डज इट डू? इट हैज एन ऑब्जेक्ट which is view dot on click listener, and then the uh, the return, like the function, it's like function के अंदर एक और function है यहाँ पे. So it's of type object or view on click listener, and then you're calling in another function inside it, function on click, a view of a view 2 of type view, and the function is calculate tip. ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. तो हायर ऑर्डर इन लैम्डा का यूज हमें यहाँ आ रहा है इतना सारा कोड के बजाय, इसने मुझे बहुत छोटा कर दिया. कैलकुलेट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ से मैंने व्यू उठाया, यहाँ से, because it's of returned, the data type is of view, small view. It's not view 2, it's view, it's a small view. क्वेश्चन मार्क हम तब यूज करते हैं, यहाँ पे आगे आएगा, बट क्वेश्चन मार्क हम तब यूज करते हैं तो चेक इफ वट एवर वन पासिंग, इसके अंदर की कुछ वैल्यू है भी या नल है, so that your app doesn't crash. In case it is null, then it will figure out something. So type है view, and then the return function or the return value is calculate tip. So view calculate tip. मेरा function बहुत छोटा हो गया, right? So also you can see कि जो मेरा lambda है, it has the same function type as the on click method. It takes one view argument and returns unit, which means like no value. इसको और छोटा कर सकते हैं हम into something called because of something called single abstract method conversion. So what it does is कि जो lambda function है, it converts that lambda into an on click listener object, और फिर वो implement करता है एक single abstract method on click. तो we just need to make sure कि जो हमारा lambda function है उसका return type, the lambda function का type है, it matches the function type of this abstract function. And now this view parameter, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे? ये जो view parameter type है ये कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है मेरे lambda में, तो हम इसे हटा सकते हैं. You can simply write calculate tip, like you can simply have the function body in the lambda. Alright, इस वाले एक्टिविटी के बाद, so take a break after this one. Okay, so we need to make words list. This is the app we were building. यहाँ पे इसने एक words app बनाया. इसमें सारे letters है. When you click on each letter, तो फिर एक list आती है of some say 5 or 6 words of that letter, starting with that letter. And then another thing is when you click on each word, it takes you to a place that you're shown the definition of that word. ठीक है. This is the app we're building. तो इसमें क्या है, अगर मैं ए पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी ऑफ अबाउट अ क्यूट ऑसम. ठीक है, एंड सो यहाँ पे वी नॉट यूजिंग अ म्यूटेबल लिस्ट, क्योंकि वी डोंट वांट एनी चेंजेस. कि मेरी जो लिस्ट डिस्प्ले होगी वो एक, इट्स विल बी रीड ओनली लिस्ट, राइट? आई डोंट वांट टू ऐड, रिमूव और डू एनीथिंग. So it's not a mutable list, it's just a read only list of
सो पहले इसने एक लिस्ट बना दी अबाउट उसमें इसने 3 वर्ड डाले एंड अभी इसे थोड़ा छोटा बनाया सो टिल सी तो 3 वर्ड स्टार्टिंग विद ए, 3 वर्ड स्टार्टिंग विद बी, 3 वर्ड स्टार्टिंग विद सी, ये एक पूरी लिस्ट बना दी इसने रीडों की लिस्ट ऑफ। अगर मुझे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स चाहिए स्टार्ट विद द लेटर बी तो यू कैन यूज द फंक्शन filtered words dot filter, it starts with b and ignore case, so ignore cases कि small b हो या capital B हो doesn't matter, it starts with b, so ignore case true ताकि वो small b capital B ना करे, in case there's a word with capital B तो उसको ऐसा ना हो कि print ना करे, and then starts with function में it returns true if a uh, if a string starts with a specified string means b. If it starts, if whatever string you want, it starts with your specified value or string, then you call the function start with, and then you can ignore case to match b or a capital B. तो अगर उसको run करोगे तो balloon, best and brief ये print हो जाएंगे. Now say you want कि मेरे पास हर बार जब मैं ऐप खोलूँ तो सिर्फ b की लिस्ट, अभी तो 3 वर्ड है, right? बी के बहुत सारे वर्ड्स हैं इस दुनिया में, सो वी वांट कि हर बार जब मैं ऐप खोलूँ तो मुझे सेव लिस्ट ना आए, मुझे रैंडमली शफल करके आए, so you can use something called shuffle. It's a function in Kotlin. It is used to make a copy of your collection with the items that it has, it they're randomly shuffled. तो अब जो फिल्टर्ड वर्ड्स है मैं उसमें एक और चेन करके लगा रही हूँ फंक्शन डॉट शफल, तो पहले आया था balloon best brief, अब मैंने प्रिंट किया तो आया brief balloon best. So words are randomly shuffled, they're in different order. Suppose you don't want कि सारे words display हो एक बारी में, you have a list of 10,000 words और तुम चाहते हो कि एक बार में 10 word display हो, एक बार में 500 word display हो. So what you can do is dot take function में uh, you get the first, it starts from the starting, it's not random, from the starting whatever number you specify उतना number of words it will print. So shuffled words, then take two. So brief and balloon. Okay, now you also want कि मेरे जो list के functions आए वो sorted आए. तो you can use the function sorted. तो अभी alphabetically arrange कर देगा balloon and then brief. And अगर तुम्हें same चीज C में करनी हो, then you can just change the string here C. And then एक बार में एक word display हो. Alright, so that is it. Not for this session, we'll take a short break of half an hour. And we will finish activities and intents test navigation. We will finish the first part of this unit. So you can have your lunch or whatever in this half an hour break. Hello.
Okay, so um, we finished collections in Kotlin. Let's get back to activities and intents. Now, the test navigation one, this is for you to go on your own, this test navigation. Stages of the activity lifecycle, I will be covering half of it. The rest half tomorrow is session 6. Let's start with the activities and intents. Okay, तो अभी हम जो ऐप बना रहे हैं, what that app does is very simple. वहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन में ए बी सी डी बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं, देन एवरी टाइम यू क्लिक ऑन द लेटर, जैसे ये यहाँ पे इसमें बड़े बटन दिए हुए हैं, वहाँ पे छोटे दिए हुए हैं, so if you click on the letter, एक और स्क्रीन खुल जाती है, words that start with A, and then 6 worded list appears, and then अगर तुम किसी पे भी क्लिक करोगे, जैसे तुमने about पे क्लिक किया, you are led to this page where there's the dictionary definition of about. तो ये सारा what we are doing is we're navigating from one screen to another. We do that with something called intents. ठीक है, पहले हम इस कोड को जितना कोड बना हुआ है, let's download that. हम स्टार्टर से करना है. इन केस किसी का मेन खुल जाता है, सीधा स्टार्टर खोल रहा है, इन केस किसी का मेन खुल जाता है, यहाँ से क्लिक करके स्टार्टर खोल लेना. Import. Okay, जब तक ये खोल रहा है, okay, जब तक खोल रहा है, let's get back. Okay, so इसमें बहुत सारी files हैं. In your project folder, there is detail there are following classes. There is detail activity, there is letter adapter, there is main activity, and there is a word adapter. मैं देख ले सारे क्या करते हैं. लेटर अडेप्टर जो है, दिस वन, ये रिसाइकलर भी यूज करता है इन मेन एक्टिविटी. हर जो हर जो लेटर है, इट्स अ बटन, इस पे ऑन विथ लिस्नर लगा है, एंड करेंटली वो एम्प्टी है, अभी वो कुछ कर नहीं रहा है. उस बटन से हम नेविगेट कहाँ जाएंगे, वो हम उसका कोड लिखेंगे डिटेल एक्टिविटी में. वर्ड अडेप्टर जो है, इट्स ये रिसाइकलर भी यूज करता है इन डिटेल एक्टिविटी, जहाँ पे एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिस्प्ले करनी है. um, अभी हम स्क्रीन को नेविगेट इस करना इसमें नहीं सीखेंगे, बट वी वी शुड नो दैट हर वर्ड जो है हर वर्ड has also corresponding button which leads you to the dictionary definition on the browser with the on click listener. Then main activity जो है, उसमें you will have to implement a few changes. इसमें मेन्यू ऑप्शन होगा, इसमें फर्स्ट स्क्रीन होगी टू डिस्प्ले, और एंड आल्सो देयर वुड बी लाइक एन ऑप्शन टू डिस्प्ले कि जब इसमें बटन्स होंगे कि यूजर को लिस्ट में चाहिए या फिर ग्रिड में चाहिए. Okay, so intents. Now, what are intents? Intents, basically, intent is an object which, sorry, which represents some action to be performed. मतलब हम इसके इसको uh, intent basically it's an object which we use to perform some action on our screen.
मतलब इसका मोस्ट कॉमनली इसका यूज इज टू लॉन्च एन एक्टिविटी, नॉट नेसेसरली दैट, मोस्ट कॉमनली ये यूज होता है. एंड डू नॉट कंफ्यूज इट विद द फैक्ट कि uh, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस इसका काम, इंटेंट का काम एक्चुअली रिक्वेस्ट परफॉर्म करना नहीं है. ठीक है, इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट which is representing that some action has to be performed. What action has to be performed is not the work of intent. ठीक है, तो दो तरह के इंटेंट होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट इंटेंट जो होता है इट्स वेरी स्पेसिफिक, जब हमने ये बताया कि एग्जैक्टली कौन सी एक्टिविटी लॉन्च करनी है, कौन सी स्क्रीन खोलनी है अपने ऐप में, देन यू गो फॉर एन एक्सप्लिसिट इंटेंट. इम्प्लिसिट इंटेंट इज मोर एब्स्ट्रैक्ट, माने कि तुम सिस्टम को ये बता रहे हो कि मुझे किस तरह का एक्शन करना है. से मुझे एक लिंक ओपन करना है, ठीक है, या मुझे फोन कॉल करनी है. अब उसको कैसे करना है ये सिस्टम के ऊपर है. It is responsible for figuring out how to fulfill the request, not the intent. Um, हम दोनों यूज कर चुके हैं, but you haven't read the definitions. Suppose ये एक ऐप है, यहाँ पे अगर मैं शेयर पे जाती हूँ तो दैट वुड बी एन इम्प्लिसिट इंटेंट. ठीक है, क्योंकि मैंने शेयर किया, सो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रही है मेरे पास. माई इंटेंट इज एंड आई वॉन्ट टू शेयर इट. मैं यूजर को ये बता रही हूँ, मैं ब्राउजर को, मैं अपने इस ऐप को ये बता रही हूँ, आई वॉन्ट टू शेयर इट. अब वो शेयर किस तरह से कर रहे हैं, गूगल क्रोम में किस तरह से कर रहे हैं, ब्लूटूथ से कैसे कर रहे हैं, जीमेल से कैसे कर रहे हैं, इट इज नॉट द एप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. And explicit intent uh, is more openly visible. मतलब इसमें you are, the app is responsible for presenting the screens, ठीक है, and for the entire process. ये सारा काम ऐप का है, it's explicit intent. And implicit intent हम तब use करते हैं when we know that other, like it's basically for when we rely on other apps for the actions. Say you want to share it, say you want to make a phone call, you're relying on other apps to determine the end result. So implicit intent and explicit intent में दोनों में they describe the request, not the actual result. And then implicit is when you want to present activities from another app often, or a system feature, and this is generally your own app's activities. Explicit. Okay, so let's set up explicit intent. हम चाहते हैं कि फर्स्ट स्क्रीन पे अगर यूजर एक लेटर टैप करे तो वो एक सेकंड स्क्रीन पे ले जाए उसे, जहाँ पे उसे एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ जाए विद द सेम लेटर, विद स्टार्टिंग विद दैट लेटर. तो इसमें से डिटेल एक्टिविटी ऑलरेडी बना हुआ है. We have a detailed activity already, it's implemented. हमें बस इसको लॉन्च करना है विद एन इंटेंट. ठीक है, नाउ क्योंकि हमारे ऐप को एग्जैक्टली पता है कौन सी एक्टिविटी लॉन्च करनी है, सो दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सप्लिसिट इंटेंट. सो हम जाते हैं लेटर अडेप्टर में, यहाँ से हम डिटेल एक्टिविटी को कॉल करेंगे. स्क्रॉल डाउन टू माइंड व्यू फोल्डर, यहाँ below the line to set the button text, इसके नीचे to set on click listener for a holder button. Holder button के लिए we want to set an on click listener. ठीक है, इसके अंदर हम रेफरेंस पास करवा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट का, and then we are creating an intent, val intent, capital intent, it's a keyword, and then इसके अंदर पास करवा रहे हैं context, and हम पास करवा रहे हैं class name of destination activity. Detail activity में detail activity को call करना है, right? That's the activity you want to launch. So you write the name of detail activity, then you specify that it's a class Java. You're specifying it where to find it. Okay? So class के अंदर तुम्हें Java के अंदर तो मिल जाएगी. Okay. Now if हमने तो स्टेटमेंट लिख दी, बिहाइंड द सीन्स एक एक्चुअल डिटेल एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑलरेडी फॉर यू विद दिस स्टेटमेंट. ठीक है, नाउ वी आर यूजिंग द पुट एक्स्ट्रा मेथड. सो पुट एक्स्ट्रा मेथड क्या कर रहा है, इट्स पासिंग इन लेटर एज द फर्स्ट आर्गुमेंट, एंड
बटर का जो टेक्स्ट है एज द सेकंड आर्ग्यूमेंट. एक्स्ट्रा क्या होता है? एक्स्ट्रा से इंटेंट इज सिंपली a set of instructions, right? It's not determining actually में क्या हो रहा है. It's just a set of instructions. It's just a request. So here there is no instance of the destination activity just yet. ठीक है? Instead, extra जो है, it's a piece of data which is given a name to be retrieved later. It's similar to जैसे हम argument pass करते हैं ना function. Now detail activity since किसी भी लेटर के लिए हो सकती है, right? A B C D कोई भी क्लिक कर सकता है यूजर. तो हमको ये हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा लेटर प्रेजेंट करने हैं. We need to tell it which letter to present. That's why we're passing first argument as letter. Then the second one, toString. हाँ. So why do you think we're adding a toString? अगर हम holder dot button dot text कर रहे हैं, isn't that supposed to be string? So it's not exactly a string. It's a char sequence. Char sequence is an interface. Interface में बाद में आएंगे. Char sequence basically it's a way to ensure कि जैसे जो मेरा कोई भी टाइप से स्ट्रिंग वो कुछ सर्टेन फंक्शन और प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करे. मतलब जैसे हम चाहते हैं कि जो बटन का टेक्स्ट हो वो टेक्स्ट ही हो, मतलब स्ट्रिंग ही हो, राइट. लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है ना कि बटन से जो टेक्स्ट आया वो स्ट्रिंग ना हो, वो कैर सीक्वेंस हो, राइट. तो उसके लिए हम toString मेथड लगा रहे हैं ताकि वो कैर सीक्वेंस ना हो. We want to ensure that it's of type string, so we're doing it to toString. And वो text का method जो होता है, uh, it can only accept a string. Like we want कि it should only accept a string, not just any type of char sequence. इसलिए हम toString method लगा रहे हैं. इन द सेंस कि जब मेरा होल्डर और बटन डॉट टेक्स्ट से वैल्यू आई वो एक कैर सीक्वेंस टाइप क्या है. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो स्ट्रिंग टाइप क्या है, वो कैर सीक्वेंस टाइप क्या है. अब जो मेरा फंक्शन है मैं चाहती हूँ कि वो स्ट्रिंग ही ले, तो मैं toString लगा रही हूँ कि इन केस कोई और कैर सीक्वेंस आ गया हो तो स्ट्रिंग में हो जाए. Then we call the start activity with this intent from on the context object. अच्छा, अगर आपको इस पॉइंट पर रन करेंगे तो जो मतलब किसी भी लेटर को रन कर लो तो सारी लिस्ट ऑफ वर्ड्स ए से शुरू होने वाली आती है. दैट्स बिकॉज डिटेल एक्टिविटी में वी नीड टू चेंज इट कि सिर्फ ए ना दिखे, जो भी लेटर पास हुआ है उससे दिखे. तो हम ये चेंज कर लेते हैं अपना. I want to set a context. Set an intent. I want a put extra method. अच्छा, अब हम डिटेल एक्टिविटी में जाते हैं तो यू सी यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटर आईडी इज ए, इसलिए जब भी कॉल हो रहा है हमेशा ए ए से ही सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स आ रही है. वी नीड टू चेंज दैट ऑन क्रिएट मेथड. हाँ, तो लेट्स रिप्लेस फर्स्ट. यहाँ पे ये वैल लेटर आईडी सीधा ए को हटा रही हूँ मैं. डोंट वांट अ हार्ड कोडेड कि हर बार ए ही आए. हम लेटर आईडी को चेंज कर रहे हैं टू दिस. अब ये क्या है? फर्स्टली जो इंटेंट है ये कहाँ से है? इंटेंट डिटेल एक्टिविटी का पार्ट तो नहीं है, राइट. ये इंस्टेड ये हर लाइक किसी भी एक्टिविटी का पार्ट हो सकता है, ठीक है. इंटेंट इट्स जस्ट कीपिंग अ रेफरेंस to what intent is used to launch the activity. Extras properties है ये it's of type bundle and it
जैसे हमने पीछे किया था पुट एक्स्ट्रा, ऐसे जितने भी एक्स्ट्रा हमारे ऐप में पास हुए, it's a way to provide access to all the extras passed into my intent. Then the get string letter. Um, sorry. Before that, why do they both have a question mark? जो मैं पीछे बता रही थी अभी नल वाली चीज, दिस इज व्हाट दिस इज, कि अगर मेरे ऐसा हो सकता है कि इंटेंट और एक्स्ट्रा में नल हो, क्योंकि नलेबल प्रॉपर्टीज है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि इनमें कोई वैल्यू ना हो। सपोज कि तुम चाहते हो कि कोई वेरिएबल नल हो, एक तो ये हो सकता है कि these properties are nullable. सेकंड थिंग इज कि सपोज तुम चाहते हो कि कोई वेरिएबल नल हो, तो जो इंटेंट प्रॉपर्टी है, जो ये वाली स्मॉल वाला इंटेंट है, हो सकता है कि ये एक्चुअली इंटेंट ना हो, माने कि ये जो एक्टिविटी इट वाजंट लॉन्च्ड आउट ऑफ इंटेंट, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो एक्स्ट्राज है वो बंडल का पार्ट ना हो, बट रादर दे आर अ वैल्यू कॉल्ड नल, ये भी तो हो सकता है। तो नल का मतलब क्या है? नल का मतलब ये है कि इट्स बेसिकली जब कोई वैल्यू के एब्सेंस होते हैं, लाइक देयर इज नो वैल्यू, सो या तो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर सकता है या फिर ऑब्जेक्ट नल हो सकता है। सो से तुम्हारा ऐप एक ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश करेगा और एक ऐसा फंक्शन एक्सेस करने की कोशिश करेगा जो कि एक नल ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा ऐप क्रैश हो जाएगा। तो नल सेफ्टी के लिए और हम, ताकि हमारा ऐप क्रैश ना हो, वी यूज दिस क्वेश्चन मार्क। तो अगर इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि इफ इंटेंट इज नल, तो तुम्हारा ऐप वुड नॉट इवन एक्सेस द प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड अगर तुम्हारा इंटेंट नल है, तो वो एक्स्ट्रास पे जाएगा ही नहीं, और से इंटेंट नहीं है, एक्स्ट्रास नल है, अगर एक्स्ट्रास नल है तो वो गेट स्ट्रिंग तक भी नहीं जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा, इट वोंट इवन अटेम्प्ट टू कॉल द नेक्स्ट मेथड। तो हाउ डू यू नो कि कौन सी प्रॉपर्टीज क्वेश्चन मार्क वाली होती है, लाइक कौन सी प्रॉपर्टीज नल हो सकती हैं, नलेबल प्रॉपर्टीज? यू कैन व्हाट यू कैन डू इज, हम लिखने इफ आई एम राइटिंग इंटेंट, हाँ, तो यहाँ पे एक्स्ट्राज, कैन यू सी एक्स्ट्राज फ्रॉम गेट एक्स्ट्राज बंडल क्वेश्चन मार्क, तो ये आ रहे ना, दैट मीन्स कि दिस इज अ नलेबल प्रॉपर्टी। तो या तो इधर क्वेश्चन मार्क होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, दैट मीन्स इट्स अ नलेबल प्रॉपर्टी। And finally, get string, actual letter receive हो रहा है हमारा get string से letter, and then we're converting it to a toString, तो ensure कि वो null नहीं है, it's for sure a string। अच्छा, अगर हम रन करेंगे तो ये अभी हर लेटर के लिए अलग लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे जो पहले अपना ठीक कर लेती हूँ। सो हियर जो मेरा कोड है टू फॉर्म इंटेंट, और जो मेरा सिलेक्टेड लेटर and the code to perform the intent and to retrieve the selected letter, इन दोनों का मैं हार्ड कोड किया हुआ है, the name extra, like with the name letter which is a type of extra, ठीक है। तो ये इस छोटे से एग्जाम्पल के लिए तो वर्क कर रहा है करेक्टली कि दोनों का नाम एक्स्ट्रा है, लेकिन बहुत बड़े ऐप्स के लिए इट्स कंफ्यूजिंग, क्योंकि वहाँ पे मोर देन वंस कॉल, मतलब इफ यू नेम मोर देन एक्स्ट्रा मोर देन वंस, तो ऐप में प्रॉब्लम हो सकती है कि यू डोंट नो व्हिच वन यू आर रेफरिंग टू, और मे बी और मे बी सिर्फ दो नहीं, आप तुम तीन चार का नाम रख दो, सो इन दैट विल आल्सो प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किस पॉइंट पे कौन सा कॉल होगा। सो it's not the best approach for large apps where you may have more intent extras to keep track of, ठीक है। हम एक ये भी कर सकते हैं, सीधा कांस्टेंट बना सकते हैं लेटर। दिस इज नॉट द आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने एक्स्ट्राज ऐड करते जाएंगे ऐप में,
वैसे वैसे और मुश्किल हो जाएगी, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वुड अराइज कि हम इस किस में डालें हम ये कांस्टेंट को। सपोज यू डू वांट टू पुट अ कांस्टेंट, तो हम इस कांस्टेंट को किस क्लास में डालें? तो ये जो स्ट्रिंग है इट्स यूज्ड बोथ डिटेल एक्टिविटी में भी और मेन एक्टिविटी में भी। सो हमें एक ऐसा कांस्टेंट डिफाइन करना है कि वो मल्टीपल क्लासेस के अक्रॉस यूज हो जाए और हमारा कोड भी ऑर्गेनाइज्ड है। तो एक फीचर होता है इन Kotlin, इट्स कॉल्ड कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स? इट्स लाइक you want to uh, you want to separate your constants, ठीक है, and you still want to make them usable without like particular instance of a class। मतलब तुमने एक ऑब्जेक्ट तुमने कांस्टेंट दिया और तुम नहीं चाहते कि वो एक पर्टिकुलर क्लास से बाउंड हो जाए, से मेन एक्टिविटी में ही बाउंड हो जाए। हम चाहते हैं कि ये ग्लोबल की तरह मान लो कि ये ग्लोबल मैंने एक बना दिया और मैं चाहती हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास के इंस्टेंस से ना हो, इन जनरल ये यूज हो सके। It's similar to other objects such as instances of a class. It's like an object. However, ये सिर्फ इसका एक सिंगल इंस्टेंस एग्जिस्ट करेगा तुम्हारे पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन के लिए, which is why it's called the singleton pattern. Um, बहुत सारे यूज होते हैं सिंगलटन के, बट फॉर दिस वी आर जस्ट यूजिंग इट टू organize constants and to make them accessible outside of your detail activity. तो पहले तो हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इट्स सिमिलर टू डिफाइनिंग लाइक अ क्लास। जैसे हम क्लास लिखते थे फिर नाम लिखते थे, इट्स वेरी सिमिलर। हाउएवर ऑब्जेक्ट यहाँ मेरा कीवर्ड है, सो कंपेनियन ऑब्जेक्ट एंड देन कंपेनियन इज आल्सो अ कीवर्ड एंड it means that it's associated with detail activity and इसको हमें कोई सेपरेट टाइप नेम देने की जरूरत नहीं है। then we write a const val letter equal to letter। हमने लेटर में प्लेस कर दिया ऐसे। अब इसे यूज करने के लिए यहाँ पे अपडेट कर दिया जो हमने पहले बनाया था। यहाँ पे एरर दिया क्योंकि लेटर तो कुछ है ही नहीं। What? यहाँ पे डालना है and I want to put this। ओके, सो जहाँ पे हमने लेटर अडेप्टर में भी क्या था, ये यहाँ पे हमारे पास था लेटर पुट एक्स्ट्रा इंटेंट में। ओके, नाउ लेट्स सेट अप इम्प्लिसिट इंटेंट। मोस्ट केसेस में हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटीज हमारे ऐप से रन हो जाएंगी। However, ऐसी सिचुएशंस आ सकती है इन विच वी डोंट नो कौन सा ऐप या कौन सी एक्टिविटी लॉन्च करनी है। जैसे कि इसमें एक स्क्रीन पे बटन है फॉर अ लेटर। व्हेन यू क्लिक ऑन द लेटर द लिस्ट ओपन्स, देन व्हेन यू ओपन द लिस्ट, तो फिर तुम किसी भी एक वर्ड पे क्लिक करोगे तो तुम्हें उसके डेफिनेशन पे जाना है, ठीक है। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। हाउएवर, अब से कि तुम्हारे यूजर के फोन पे गूगल क्रोम इंस्टॉल्ड है और माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल्ड है या फिर फायरफॉक्स है या कोई भी और ऐप है, तो हम ये पहले से डिफाइन नहीं कर सकते कि वो डेफिनेशन किस में खुलेगी। हमें बस ये पता है कि हमें डेफिनेशन खोल के दिखानी है, राइट? दैट्स योर रिक्वेस्ट। तो you can't know for sure what app the user has installed, ठीक है। Nor can you assume how they may want to look up a word। This would be an implicit intent। हम अपने ऐप को इंफॉर्मेशन देते हैं on what the action should be and then the system figures out what to do with that action, ठीक है।
तो देखो, किसी भी गूगल सर्च करने के लिए, गूगल सर्च किसी पे भी करने के लिए, यू विल नीड दिस URL. तुम्हारे किसी भी सर्च का देखो, google.com/search q equal to intent and then something, right? तो तुम्हारे किसी भी गूगल सर्च में ये चीज होती ही होती है, https://google.com/search q equal to, ये प्रीफिक्स है, ठीक है, सर, प्रीफिक्स, ये किसी भी सर्च में होता ही है. उसके आगे जो भी है इज डिफरेंट. सी, यहाँ पे क्या है, इंटेंट इन एंड वर्ड, बिकॉज दैट्स व्हाट आई सर्च्ड. ये सर्च अलग हो सकते हैं, बट दैट्स अ प्रीफिक्स दैट मेंटेन्स इन एवरी गूगल सर्च दैट यू डू. तो सिंस ये URL सब में सेम होता है, हम इसको एक कांस्टेंट में डिफाइन कर देते हैं इन आर डिटेल एक्टिविटी. हम लेटर किया था, हम एक सर्च प्रीफिक्स डाल देते हैं, ठीक है. ये हमारा बेस URL हो जाएगा. ये एक बेस URL है और इसको मैं किसी भी क्लास में यूज कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने कंपेनियन ऑब्जेक्ट में डाला है इसे. अच्छा, अब हम जाते हैं वर्ड अडेप्टर में. दिस हमें कॉल करना है ऑन क्लिक लिसनर ऑन दिस, ऑन द वर्ड बटन, ठीक है. तो होल्डर डॉट बटन, जो भी वर्ड है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड देन वी विल क्रिएट अ URL. So we will parse, ठीक है. अच्छा, URL. So URL क्या होता है, URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. URI इज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है. जैसे URL किसी भी वेब पेज को पॉइंट करता है. URI इज लाइक अ जनरल टर्म. जैसे URI के अंदर सारे UR फॉल कर सकते हैं. देखो, URL, URN, there are a few more, but we'll get to that later. So basically URI is like a very broad format or a category, and then uske andar there come different types: uniform resource locator, uniform resource number, I think. हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, सॉरी, URL. हर URL एक URI है, but हर URI एक URL नहीं है, obviously. URI is like a ब्रॉड थिंग, एंड देन उसके अंदर इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, URL. सो हम एक वैल क्वेरी URL दे रहे हैं ऑफ टाइप URI, एंड आई वांट URI डॉट पार्स. डिटेल एक्टिविटी में जाके सर्च प्रीफिक्स उठाओ, एंड देन जो भी मेरा वर्ड है, आइटम इज माई वर्ड, उसको सर्च करना है, ठीक है. दैट्स व्हाट दिस इज डूइंग. ये आइटम है, बटन डॉट टेक्स्ट इज आइटम. सो आई वांट टू सर्च द आइटम. हाँ, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करी है ताकि जो मेरा वर्ड है, आइटम, वो अपेंड हो जाए टू दिस सर्च प्रीफिक्स. URN जो होता है वो टेलीफोन नंबर्स के लिए होता है. सो सी, ऑल other URLs, for example, अगर किसी फोन नंबर का एड्रेस हो, it would begin with tel, right? Telephone. So you tell and then the number. So that's a URL. Now, there is इस इस पूरे उसने अपनी ओन एक्टिविटी को कोई भी रेफरेंस करके कॉल नहीं किया गया है. हम सिंपली एक URI दे रहे हैं, एंड देन हम ये नहीं देख रहे, हम ये नहीं बता रहे उसे कि अल्टीमेटली उसे कैसे यूज करने में, जस्ट गिविंग इट अ URI, राइट. सो लेट्स पुट एन इंटेंट. व्हाट इज माय इंटेंट? इंस्टेड ऑफ पासिंग अ कॉन्टेक्स्ट एंड एन एक्टिविटी, हम पास कर रहे हैं एक्शन व्यू अलोंग विद दैट URI. एक्शन क्या होता है? एक्शन व्यू इज लाइक
इट्स नॉट अ स्पेसिफिक इंटेंट, यू वांट टू पास अ जेनेरिक इंटेंट जो क्या करता है, एक यूआरआई लेता है, हमारे केस में इट्स अ वेब एड्रेस, अ यूआरएल, it takes a general URI and then system knows कि इस URI को प्रोसेस करने का तरीका क्या है, कि इसको वेब ब्राउजर में खोल दो, ठीक है। कुछ और भी तरीके होते हैं, कैटेगरी ऐप मैप्स, इट्स यूज फॉर लॉन्चिंग द मैप वाला ऐप, कैटेगरी ऐप ईमेल, इट्स यूज फॉर लॉन्चिंग द ईमेल ऐप। सी इसको कोई गूगल मैप्स नहीं लिखा है या फिर यहाँ पे जीमेल या मेल कुछ नहीं लिखा है, इट्स जस्ट लॉन्चिंग द ईमेल ऐप वट एवर योर फोन यूजेस। It's launching the gallery app, launching, setting an alarm in the background, initiating a phone call. तुम किससे फोन कॉल करते हो, तुम ट्रू कॉलर से करते हो, तुम कॉल नॉर्मल लॉग से करते हो, दैट्स नॉट स्पेसिफाइड, इट्स जस्ट अ जेनेरिक इंटेंट जो तुम्हारे एक यूआरआई लेता है, जो हमारे केस में यूआरएल है, एंड देन इट नोज कि इस इंटेंट को प्रोसेस करने के लिए आई नीड टू ओपन दिस यूआरआई इन अ वेब ब्राउजर, व्हाटएवर द यूजर्स वेब ब्राउजर इज। अच्छा, एंड देन फाइनली इवन दो हम कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी लॉन्च नहीं कर रहे अपने आप से, वी नीड टू टेल द सिस्टम कि हमें एक और ऐप लॉन्च करना है, राइट। तो हम स्टार्ट एक्टिविटी में हम स्टार्ट एक्टिविटी कॉल करते हैं, उसमें हम इंटेंट पास करवा देते हैं। Okay, now let's set up this menu and icon. Okay, so अब हम एक मेन्यू ऑप्शन डालेंगे यहाँ पे, see here towards the side में you can see this option, right, of either you want a grid layout or a button layout. So अभी buttons में है, so it's like it's presenting you an option of a grid, and you get it in grid, it gives you the option of a list, sorry, not button. So so toggle, so how to do that? ये जो ऊपर ऊपर लिखा है ना, तुम्हारे हर ऐप को जैसे तुम रन करने के लिए, you see this thing up, this called app bar, and sorry, this thing, sorry, ये तुम्हारा ऐप बार है, it shows you the app, the name of the app, and then it can be customized, जैसे तुम्हें यहाँ पे सर्च दिख रहा है, यहाँ पे ये मेन्यू दिख रहा है, यहाँ पे एक नेविगेशन और है छोटा सा मेन्यू। तो अभी हम पूरा बड़ा सा मेन्यू नहीं बना रहे, वी जस्ट वांट टू ऐड अ कस्टम बटन, ठीक है। हम अपने ऐप पर में बस एक कस्टम डाल रहे हैं, बड़ा सा मेन्यू नहीं बना रहे, ताकि यूजर लेआउट चेंज कर पाए। हाउ डू यू डू दैट? ये चीज इट्स you want to insert view module and a view list. In case you don't know how to do that, because I gave this pathway to do on your own last time. So यहाँ पे किया है, you can go to this page. How do you do it? मुझे क्या करना है, पहले मुझे I want to add a clip art vector assets called view module, and I want to name it IC grid layout. How do you do that? I want to add a vector asset, right? For asset type. ये करना है मुझे, open the resource manager and then vector asset plus vector asset. What do I want to name it? I want it to be a clip art of this. Okay. Search again. Sorry, view module डालना है मुझे, view module, and I want to name it as IC grid layout. And कोई specifications
No specification. I also want to add the asset called view list. I want to be linear layout. So, view list and linear layout. ठीक है, अभी दोनों आ गए मेरे पास. I got a grid layout and I got a linear layout.xml. And now we also need a way tell the system कि कौन सा ऑप्शन आप में डिस्प्ले करना है, कौन सा आइकन यूज करना है. तो हम रिसोर्स फाइल डालते हैं, लेआउट मेन्यू, resource file. I want it to be layout menu and a file menu. Okay. That's it. From this may, so you can see words and अब इसमें कुछ आ नहीं रहा है बात पे. I can see words. Okay. तो मुझे वो दोनों ऐड करनी है जो मैंने बनाई है. So let's add item. What was I doing wrong? So it has an Android and an app. Okay. तो मैं ऐप पे रेड से आ रहा था क्योंकि मैंने XMLNS फाइल डाली नहीं थी ऐप की. That's why. Okay. So you can see this small icon here. अच्छा, तो how do you do? जैसे कि layout start करता है, जिस any layout starts with a layout manager, constraint layout, frame layout, linear layout. इसमें हम individually views hold करते हैं. तो menu की XML फाइल start होगी with a menu layout, with a menu tag. इसमें individual options होती हैं. It has an ID. ठीक है. Just like views, menu option में भी एक ID होती है ताकि हम उसे कोड में रेफरेंस कर सके. It has a title. Title actually visible नहीं होगा. It's just useful to us to identify the menu icon. By default your app will open in a linear layout. ये toggle है तो on and off हो सकता है. And then we need to show the grid layout. So by default it's linear layout and then we're adding. हाँ ठीक है. इसको toggle करके हम वो कर सकते हैं grid layout and then show as action. ये जो है show as action. It's to tell the system कि बटन कैसे शो करना है. बिकॉज ये ऑलवेज पे सेट है तो ये बटन हमारे ऐप बार पे हमेशा विजिबल होगा. और एक चीज होती है ओवरफ्लो मेन्यू यहाँ पे था. दिस लाइक 3 dots were there and then you click it and then you see this whole menu. मैं ऑलवेज में क्या मतलब है, ऑलवेज का मतलब है कि यहाँ पे मुझे ये पूरा टाइम दिखना चाहिए. आई डोंट वांट टू बिकम एन ओवरफ्लो क्लिक करके दिखना. आई वांट इट टू बी ऑन द स्क्रीन ऑलवेज. Currently मेन्यू कुछ कर नहीं रहा है बिकॉज टॉगल नहीं डाला है. लेट्स पुट द टॉगल. Okay, let's go to main activity.
Uh, अच्छा, so firstly we need to create a property ताकि जिससे हमें ट्रैक रहे कि ऐप लेआउट करंटली किस स्टेट में है, ताकि हम उसे टॉगल करें तो भी हमें आइडिया रहे. So we create so linear layout manager is true because by default हमने linear ही डाला है उसे. Then जब यूजर टॉगल करेगा then we want कि जो भी list of items है they turn into a grid of items. बहुत तरह के रिसाइकल भी मैंने पढ़ा था कि बहुत तरह के लेआउट मैनेजर होते हैं. एक होता है ग्रिड लेआउट मैनेजर विच अलाउस कि मल्टीपल आइटम्स आ जाए एक सिंगल रो पे. सो आई मेक अ फंक्शन चूज लेआउट. इट्स प्राइवेट क्योंकि बस यहीं पे एक्सेस होगा. फंक्शन चूज लेआउट. If it is linear layout, then if is linear layout, if then recycle view तो layout का layout manager change करना है तो linear layout manager and this. अगर linear layout manager नहीं है sorry sorry my is linear layout is true. So if true, then I want my recycler view to be linear layout manager in this. अगर नहीं है, if it's false, then recycler view से मैं चाहती हूँ कि grid layout manager हो जाए and एक बार में 4 दिखे. I want 4 options to be available at once in a grid. And then we call the adapter. Why do we call the adapter? मैं याद है पिछली बार से adapter क्या करता है कि एक बारी में जैसे अगर मैंने 4 बुलाए तो एक बारी में वो 4 व्यूज प्रिपेयर करके मुझे दे देता है फ्रॉम जिस भी फॉर्मेट में डेटा पड़ा हो उस फॉर्मेट से उठा के 4 व्यू प्रिपेयर कर देता है in a format that I want and then it gives to the recycle view. तो हम if statement यूज करते हैं to assign the layout manager यहाँ पे and then adapter को भी असाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे letter adapter. It's used for both list and grid layout. List के लिए भी चाहिए होगा. So initially जब हमने अपना मेन्यू XML में किया था हमने उसको एक स्टैटिक आइकन दे दिया था राइट लीनियर का. हमें अगर उसे टॉगल करें देन अपडेट हो जाना चाहिए ना. जैसे अगर लीनियर लिया अगर मैं इसको अपडेट करूंगी तो फिर ग्रिड पे आ जाना चाहिए. एंड देन मुझे ऊपर फंक्शन जो ऊपर आइकन दिख रहा है ये भी तो चेंज हो जाना चाहिए राइट. तो इसको भी अपडेट करना पड़ेगा. We need to switch every time. So menu item dot icon if true, uh, context compat we need to get a drawable in for this instance r dot drawable dot ic grid layout and अगर false है then I need to get linear layout. से अगर true है तो मुझे अपडेट करने के लिए ग्रिड चाहिए. अगर false है तो मुझे अपडेट करने के लिए linear चाहिए. So we set the linear and grid layout based on the layout icon. The button will switch back to next time it's tapped. So ये conditionally is linear layout पे 2 चीजें और चाहिए. मैं on create options menu, on options item selected. ये 2 methods भी use करने होंगे और मुझे ये override करने पड़ेंगे. So on create options menu क्या करता है? It inflates the options menu और जो भी additional setup चाहिए वो perform करता है. And then on options item selected में हम actually call कर रहे हैं choose layout जहाँ पे button select होता है. Okay, on create options menu को ऐसे override करेंगे. Menu of type menu, so question mark, so it shouldn't be null. It's of type true or false. Inflate करा हमने r dot menu dot layout menu. So we want to inflate that into a menu. Then val layout button menu not null. Find the item. ID dot action switch layout. So it sets the icon based on
the linear layout manager is linear layout manager वाली चीज. Then I want to set the icon to the layout button. जैसे हमने ये बटन इन्फ्लेट करा, सॉरी लेआउट इन्फ्लेट करा, देन वी कॉल सेट आइकन. ठीक है, तो इंश्योर कि जो आइकन है वो मेरा करेक्ट है बेस्ड ऑन द करंट लेआउट. जैसे अगर ग्रिड है तो ऊपर मुझे लिस्ट का आइकन दिख रहा. ये मेथड लाइक आई सेड ऊपर बूलियन था, राइट? सो ट्रू और फॉल्स एंड रिटर्न करें ट्रू. अगर हम ट्रू रिटर्न करते हैं सिंस हम चाहते हैं कि ऑप्शन मेन्यू क्रिएट हो. And on options item selected may it's similar to what we did before, बस थोड़ी सी lines add करनी है. So return it's also boolean. Then return when item की item ID is r dot id dot action switch layout. This basically sets the layout manager से पहले कि true था तो जो opposite value, मतलब अगर जैसे true था तो ये उसको पहले तो उसको false करते हैं. देन हमने लेआउट और आइकन सेट कर दिए, देन रिटर्न ट्रू. और अगर कुछ भी नहीं करना मतलब अदरवाइज देन पे तो कंडीशन है, अदरवाइज डू नथिंग एंड यूज द कोड इवेंट. ठीक है, एल्स में सुपर डॉट ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्ट आइटम, मतलब कि जो सुपर क्लास में ओरिजिनल था मुझे ओवरराइड नहीं करना, जो ओरिजिनली था वही रहने में. तो एनी टाइम तुम मेन्यू का आइटम टैप होगा, दिस इज कॉल्ड टू मेक श्योर कि टू चेक कि कौन सा मेन्यू आइटम टैप हुआ है. हम जो वेन स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, हाँ ऊपर एक वेन स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं. सॉरी, अगर मेरा आईडी मैच कर रहा है विद द एक्शन स्विच लेआउट दैट मेन्यू आइटम, तो फिर हम वैल्यू को उसका नेगेटिव कर रहे हैं, मतलब उसका ऑपोजिट कर रहे हैं, फॉल्स कर रहे हैं. फिर हम चूज लेआउट और सेट आइकन को अपडेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग. नाउ सिंस जो मेरा लेआउट मैनेजर अडेप्टर है दे आर नाउ सेट इन चूज लेआउट, तो हमें ऑन क्रिएट मेन एक्टिविटी में भी चेंज करना पड़ेगा. तो ये पूरा सोल्यूशन कोड इस पे अवेलेबल है. Oh, that's because मैंने choose layout पीछे I haven't made it पीछे. I was explaining तो मैंने लिखा नहीं अपने कोड पे. Now test navigation is for you to do on your own. Stages of the activity life cycle, I will do half of it and then the other half in the quiz we'll do in the next one. So we'll do it here. अच्छा, so यहाँ इसमें it's making a different app. ये वाला ऐप क्या कर रहा है जो हमने वीडियो में देखा था कि यहाँ पे डेजर्ट है, जितनी बार हम डेजर्ट पे क्लिक करोगे उतनी बार विल अपडेट द डेजर्ट सोल एंड विल आल्सो अपडेट दिस योर कार्ट वैल्यू. ठीक है, the app updates values in the layout for a number of desserts that were purchased and the total number the user spent, total amount the user spent. तो यहाँ से we can get the starter app from GitHub. Okay, so ये what are the stages of a life cycle. Now हर एक्टिविटी जो भी हम अभी तक क्रिएट करें, एवरी एक्टिविटी हैज अ लाइफ साइकिल. इट्स वेरी सिमिलर टू जैसे हम बटरफ्लाई या बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है, जस्ट 4 or 5 स्टेजेस, राइट? तो इसमें भी इट्स सिमिलर कि हमारी एक्टिविटी में भी कुछ लाइफ साइकिल्स हैं. इट क्रिएट्स, इट स्टार्ट्स, इट प्रॉब्ली स्टॉप्स और रिज्यूम्स एंड इट फिनिशेस. ठीक है, so see, it gets started, it gets created, so it's initialized, then it's created, then it's started, then when we stop so it can be resumed, and then if it's resumed it gets started back, and then it is destroyed. So जैसे जैसे हमारे यूजर नेविगेट कर रहे हैं बिटवीन एक्टिविटीज, तो
हमारी एक्टिविटी की एक्टिविटी की स्टेट चेंज होती रहती है। जैसे अभी वर्ड ऐप में हमने एक बटन, जैसे फर्स्ट स्क्रीन थी जिस स्क्रीन पे सारे बटन्स थे ए बी सी डी ई एफ जी, वहां पे क्लिक करते थे एंड देन वी वुड गो टू द लिस्ट ऑफ वर्ड्स, राइट। तो जब हम लिस्ट ऑफ वर्ड्स वाली एक्टिविटी पे गए तो जो पहली एक्टिविटी थी विच वाज ए बी सी डी ई एफ वाली स्क्रीन, दैट्स ऑन होल्ड, दैट्स पॉज, एंड देन व्हेन यू गो बैक, तुम बैक करते हो और स्क्रीन पे वापस आते हो, देन इट्स रिज्यूम। और जो अभी जिससे रिज्यूम कर, जिससे वापस आए हैं, देन दैट्स पॉज, ठीक है। और दैट्स डिस्ट्रॉयड अगर तुम वापस पे नहीं जाना। सो दैट्स व्हाट एक्टिविटी लाइफ साइकिल इज। um, uh, इसे ऑफन हम चाहते हैं कि हमारी एक्टिविटी का बिहेवियर चेंज हो और यू वांट टू रन सम कोड व्हेन लाइफ साइकिल चेंजेस। तो हर बार सो देयरफॉर जो भी एक्टिविटी क्लास होती है एंड देयरफॉर जितनी भी सब क्लासेस होती है एक्टिविटी, जैसे कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, they have like they have a set of life cycle callback methods, ठीक है। ये callback methods तब इन्वोक होते हैं जब हमारी एक्टिविटी को मूव करना होता है from one state to another, and then you can override these methods in our own activities to uh, perform what we want, ठीक है। जैसे callback method हमने कॉल किया, बाय डिफॉल्ट उसमें ऑन स्टॉप या ऑन रिज्यूम का कोड है। वी वांट कि वो कुछ और भी प्रेजेंट करे। वी वांटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इन रिस्पॉन्स टू इट पॉजिंग और रिज्यूमिंग, एंड नॉट जस्ट so by default उसमें है कि activity paused, I wanted to do something else also। तो इसके लिए हम कॉल बैक मेथड्स ओवरराइड कर सकते हैं। say you have this activity life cycle, your activity started. The activity is initialized on create, it gets created. It started on start या फिर on restart, it gets started. Then you put an on resume, say it's paused. So on resumed, it goes to resumed. And so इस point पे activity पे focus है. And then resumed or started में activity visible होती है हमारी. Create, initialized or destroyed पे it's not visible on your screen. Then resume के बाद हमने से वापस पॉज करके रिज्यूम किया। वी कैन डू दैट टू। सो ये जो एरोज हैं, ये छोटी वाली, दे आर बेसिकली सेइंग ऑन क्रिएट, देन यू स्टार्ट, देन यू कैन पॉज एंड रिज्यूम, देन यू कैन स्टॉप इट एंड देन यू कैन डिस्ट्रॉय इट। ओके, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि कब ये कॉल बैक मेथड्स इन्वोक होंगे एंड हर बार जब ये कॉल बैक मेथड्स इन्वोक होते हैं तब इन पे क्या करना है। सो ये डायग्राम बहुत कंफ्यूजिंग है, वी डोंट नीड देम राइट नाउ। So we have this on create method, इसमें हम उसमें ऐड करेंगे login, जैसे कि एंड्रॉइड लाइफ साइकिल में उस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए इट्स हेल्पफुल टू नो कि व्हेन दीज मेथड्स आर कॉल्ड, ठीक है। जैसे इसमें यू कैन नो जब भी तुम में से किसी को एरर आता है, आई टेल यू गाइस टू चेक योर लॉग कैट, राइट। तो लॉगिंग इज वेरी हेल्पफुल क्योंकि इट टेल्स यू कि वेयर द थिंग्स वेंट रॉन्ग। So once in, so हम log कर देते हैं। We can write statements for log. Logging basically it enables you to write short messages to a console while the app runs. And then you can use it to use it to show you when different callbacks are triggered. So basically छोटे छोटे मैसेज लिखेंगे हम लॉगिंग से to the console, जिससे पता चल जाए कि जो स्टेट चल रही है तो उसमें भी लिखा है कि स्टेट रनिंग, और जहाँ पे पॉज हो गई सो वी नो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। ऑन क्रिएट मेथड, जैसे ऑन क्रिएट मेथड तब कॉल होता है व्हेन हम किसी एक्टिविटी को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो फॉर इसमें क्या होता है, इन्फ्लेट कर सकते हैं लेआउट, यू कैन डिफाइन ऑन क्लिक लिसनर्स, यू कैन डू व्यू बाइंडिंग। सो
दिस ऑन क्रिएट मेथड इज कॉल्ड जस्ट वंस, मतलब एक्टिविटी बस एक बार इनिशियलाइज करती है, सो वो एक बार क्रिएट होगी। वो पॉज, स्टार्ट, रिज्यूम बहुत बार हो सकती है। सो हम चाहते हैं कि हमारी एक्टिविटी ऑन क्रिएट पे एक मैसेज दे लॉग का। हाँ, देयर इज, तुम इनमें देखोगे यहाँ पे ओवरराइड फंक्शन ऑन क्रिएट सुपर डॉट ऑन क्रिएट। ठीक है, बार बार आता है। क्यों आता है? जब हम ऑन क्रिएट मेथड को ओवरराइड करते हैं तो हम जो उसका सुपर क्लास इम्प्लीमेंटेशन है हमें वो भी कॉल करनी पड़ेगी, तो कंप्लीट एक्टिविटी क्रिएशन। तो इमीडिएटली हम कॉल करते हैं सुपर डॉट ऑन क्रिएट। सारे लाइफ साइकिल कॉल बैक मेथड्स के लिए सिमिलर है। अच्छा, हमें एक मैसेज दिख रहा है लॉग दी मेन एक्टिविटी ऑन क्रिएट कॉल। ये क्या कर रहा है? इसमें हम तो, पहली बार इंपोर्ट लॉग क्लास अप्लाई हो जाएगी। देन ये जो लॉग क्लास है इट अलाउज यू टू राइट मैसेजेस टू द लॉग कैट। ये देखिए यहाँ पे लॉग कैट, ठीक है। It allows you to write messages to the logcat. Logcat is basically it's a console for whatever messages you want to log. Um, there are three parts to this. यहाँ पे देखो log.d. जो .d है पहले ये क्या है? Priority of a log message is when you want to know कि कितना important है मैंने message. In this case हमारा .d set है. D is debug. So और भी होते हैं .i which is for informational message, .e for error, log.w for warning, log.v for verbose. तो ये प्रायोरिटी है मेरी। सो ये पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं दिए हुए कि आई फिर ई, इज जस्ट सेइंग कौन से होते हैं। देन आई एम सेइंग इट डीबग, प्रायोरिटी अंदर ही होते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के। वी आर सेइंग log.d, सो आई वांट इट्स अ डीबग मैसेज आई वांट टू डिस्प्ले। देन देयर इज मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी माने it's the first parameter. It's a tag which basically uh, allows you to easily find your log messages in the log cat. मतलब ये जो है it's mostly the name of your class, ठीक है, mostly the name of the class, and it's a string which allows you to find your log messages more easily. And this is what I want to display on create call, the actual log message or the second parameter, which is on create call. You can also do this, the const val tag main activity, and then you pass tag and on create. Okay. So now we see a compile time constant. Compile time constant क्या होता है? It's a value जो कि change नहीं हो सकती है। अगर हम किसी variable declaration के आगे const लगाते हैं, it's a compile time constant. तो हम compiler रन करते हैं ये वाला ऐप, तो उसमें you'll see, अभी ये पूरा ऐप जो तुम import करोगे, it's not entirely correct. If you keep clicking on the app, you will see कि कुछ हो नहीं रहा है उसको tap करने से. So why? You go to logcat and then logcat में you can search here. Verbose नहीं है, debug होगा. This debug ये अपना वाला है क्योंकि मैं मैसेज पास कर चुकी हूँ. Then if you type d/main activity, तो इस logcat में जितने मैसेजेस हैं जो मेन एक्टिविटी के होंगे they will get displayed to you right here. जैसे आप डिस्प्ले हो रहा है d/main activity on create call. क्योंकि logcat में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे which aren't really helpful to you. You don't need to know anything. तो इसमें सर्चिंग कर सकते हैं. क्योंकि हमने लॉग टैग में यूज किया था, पर हमने फर्स्ट पैरामीटर में टैग यूज किया था मेन एक्टिविटी, राइट? तो हम मेन एक्टिविटी को सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट टू फिल्टर द लॉग. ये d/ का मतलब होता है दैट इज अ डीबग मैसेज. इस लॉग मैसेज में इट आल्सो इंक्लूड्स हियर द टाइम एंड द डेट and also the name of the package, com.exam. The name of package भी देता है and actual message भी देता है. So and because ये message appear हुआ है log में on create call, which means कि तुम्हारा on create method execute हो गया क्योंकि हमने on create में लागू करेंगे. Second, we have an on start method. So on start is called just after on create. तुम्हारा create हो गया, now you want to start it. तो जब on start run होता है तो हमारी एक्टिविटी हमारी स्क्रीन पे विजिबल हो जाती है. इसे initialize में it's not visible on the screen. Start पे it's visible on your screen. जैसे ऑन क्रिएट सिर्फ एक बार कॉल होता है to initialize our activity. On start बहुत बार कॉल हो सकता है हमारी, depending on
what you want to do with the life cycle of your activity. Okay. So on start is paired with a corresponding on stop. उसके बीच में on start और on stop के बीच में pause या resume हो सकता है, but it will start and stop. जैसे यूजर ने ऐप स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने एक ऐप खोला, उसके बाद तुम यू रिटर्न टू, तुमने एकदम से ऐप बंद कर दिया, तुम होम स्क्रीन पे आ गए, तुमने ऐप नहीं बंद किया, तुमने ऐप उड़ाया नहीं है, तुम बस होम स्क्रीन पे आ गए, तो मेरी एक्टिविटी स्टॉप हो गई है और वो स्क्रीन पे ऑब्वियसली इट्स नो लॉन्गर विजिबल, इट्स नॉट पॉज, इट्स स्टॉप्ड. सो तुम वापस ऐप खोलोगे अपना, इट विल स्टार्ट अगेन, नॉट रिज्यूम. Okay. So there's not, so instead of just writing on start, ये बता रहे हैं कि तुम override method यहाँ से भी ढूंढ सकते हो. You can just go to uh, place the cursor within the main activity. Select code and override methods. हम बहुत सारे आ गए. I want to start typing stop. Stop. No, sorry. I want to start. तो start में आ जाएगा मेरे पास. And you can choose whichever you want. On restart है ये. Yeah, on start unit. तो यहाँ ये अपने आप इसने दे दिया, override function on start, super on start. That's what happened here. ठीक है. Then we can add a tag for main activity, and then we can add the tag and then on start call. तो हम इसको खोल के जो log cat खोलेंगे, and then you type d main activity ताकि तुम्हारे पास वही show जो तुम्हें चाहिए. So there is an on create method, and then there is on start, then there's another on start. ठीक है. So first से अभी सिर्फ एक ऑन क्रिएट है, देन एक ऑन स्टार्ट है. अब ये करेगा, इसने होम बटन दबाया, देन फिर तुम रीसेंट स्क्रीन पे जाके फिर से एक्टिविटी खोल लिया अपनी. Activity resumes right where it left off, the same values, and then on start is logged again, second time. On pause and on resume नहीं होगा ये, it would be start and stop. तो हम यहाँ पे और log statement ला सकते हैं, on resume, on pause, on stop. You can try to do, you can add all these log statements and then try to do different things with your app. तुम ऐप उड़ा दो, एक बार तुम ऐप बंद करके खोलो, एक बार तुम ऐप से कहीं और चले जाओ, एक बार तुम ऐप में से नोटिफिकेशन बार खोल लो. You can try all of that to see क्या क्या कब कब कॉल होता है. So on create is to create the app, on start is to start it and make it visible on the screen, on resume is to get the activity focus and make it ready for the user to interact. Okay, so आज हम यही तक कर रहे हैं. These things explore life cycle use cases, and these two I will be doing in the next session. And so this test navigation is to do on your own. It's just 2 activities of this, and the quiz is left. And then in the next section, which will be tomorrow, I will start with the second and third pathway of Unit 3. So that's it for today. Make sure you complete whatever we did by far so far. Thank you.